And the finger's finally gone up. Hold him. Off stump goes flying. Ahmad Butt boxing Umar Amin with the in swinger. और ये आउट हो जाएंगे. Oh well, straight through the fielder. Oh, knocked him over, and that is the celebration. Placed away. That will be a boundary. तो यहाँ ये कदमों का इस्तेमाल कर गए हैं. फुल शॉट खेल दिया. मैच का इख्तिताम किया शायान शान तरीके से अराफात में रहा से. It's a nice bright day here in Rawalpindi for match number 14 of Barrier Town Champions Cup T20. It's Allied Bank Stallions taking on Newpur Lions live from Rawalpindi Cricket Stadium. Two very exciting teams up against each other. ABL Stallions, they're in some red hot form in this tournament, well led by Haris. Got a great balance. They've got some superstars on the side, and on the other side it's Newpur Lions, who've just picked up at the right time in the tournament. Again, well led by Imamul Haq. Hassan Nawaz, the player to look forward in that side. Well, the points table, Allied Bank Stallions right on top. They played 5, won 4 out of them, and Newpur Lions are on number 4. They played 5 and won 2, lost 3, and they've got 4 points on the table. They would like to win this one and get their tournament going towards the business end of the tournament. Yeah, it's a very important game as far as Newpur Lions are concerned. They had a last ball thriller the previous one against another very formidable side, UMT Markhors, and Allied Bank Stallions. They had a defeat in the previous game, but they came back in the last game. Good side. They've got some players in form. Hussain Talat is in some great form, and the bowler to look forward is Muhammad Ali. After a successful 4-day tournament, he's made a name for himself as far as this format is concerned. Consistent with his line, with his length. He's improved on the variations also. He's been a revelation as far as Stallions are concerned. He's got good pace, shown some great aggression also. He's been very good with the variations, that leg cutter that he's learned that we haven't seen before in his bowling, and he's taken lots of wickets also in this tournament. Number 2 in the list, well, 10 wickets, and economy also very impressive, just 7.45 for him. Shahid Aziz, we'll see him in action for Newpur Lions in the same game. Usman Tariq, will see him in the same game, 9 wickets to him. Nisar Ahmed and Musa Khan also in the list. But it's been Muhammad Ali's tournament as far as fast bowling is concerned. He's shown some great rhythm. He's shown great aggression also, and most importantly, the variations that he has used in this tournament. He's bowled those cutters and back of the hand deliveries, which is the key these days in this format. Right, the exciting part comes is when I look at this pitch. I had 2 people there, Salman Butt and Shah Faisal, looking out for the pitch. Yet another beautiful day here in Rawalpindi, and we are here for another cracking game. Talk about the conditions. It was hazy for the last couple of days. Today is bright and sunny and quite beautiful. We are at pitch number 10, and once again the dimensions are pretty standard today. 66 meters all around, and that is pretty standard, has been throughout the tournament. Talking about this particular surface, it looks dry and well rolled in. I've got Salman Butt alongside me. I'll get him in. This is pitch number 10, Salman. What do you make of it, of the first look on it? Well, obviously, as you just said, you mentioned dryness. Of course, this is the same square being used, and there's people running over it every day. So it's getting drier, it's getting abrasive. If you have a look, get a closer look to the pitch, it's getting far more rougher. So that means spinners to come in. But that means the batters, they also have to adapt.
Either play sweep shots, play along with the spin, play good cut shots, and adapt to the condition, because definitely it's going to get a touch slower and a bit more turn will come in. Okay, spinners are coming into the game, and like Salman mentioned, batters would need to be aware what options to take against spin. Looking forward to an exciting contest. Right, the surface has changed as per our experts as the matches have progressed. Salman Butt suggesting that now the shot selection have to be changed because these surfaces have been used for now over a week now. So maybe the fast bowlers are not of that use as spinners will be from here on going into the tournament. So maybe you will see those sweep shots, those cut shots being played on this rough surface. Overall, a good cricket pitch though. A good cricket pitch. Well, let's see what the captains decide on a very good pitch. Marina Iqbal is out there with the two captains. Gorgeous sunny afternoon here, and we're all set for another exciting encounter between Allied Bank Stallions and Nurpur Lions. I've got the two captains with me. Mohammad Aris leading Allied Bank Stallions, and Imamul Haq will be leading Nurpur Lions. We've got Kamran Chaudhary, who will be officiating the match. Haris, go for the flip. Tails. Tails is the call. Tails it is. क्या करेंगे इमाम? मेरे ख्याल से अब ये पूछने वाली बात नहीं रही हम बॉलिंग करेंगे थोड़ा सा अब रीयूज हो रही हैं सर्फेसेस, तो अगर आपकी स्ट्रेंथ देखी जाए तो बॉलिंग और बैटिंग तो अच्छी चल रही है, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में मजीद बेहतरी हो सकती है। जी बिल्कुल। देखें, जब भी आप T20 क्रिकेट खेलते हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं मैच में ऐसा के बाद ऐसा लगता है कि यार कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं, बट इट्स जस्ट के टाइम नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी दें, और जो हमारा मोमेंटम बना हुआ है, हम मुझे ऐसा लग रहा है अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि जो है अच्छी क्रिकेट खेलते रहें, एंड रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है। और अगर स्टैलियंस की स्ट्रेंथ देखें तो बॉलिंग उनकी काफ़ी टॉप नॉच है, स्पेशली स्पिनर्स की, तो एंड डेथ ओवर्स में एक्सेलरेशन एज अ बैटर्स सोचते हैं कि बेहतर हो सकती है। देखें, मेरा हमेशा ये मानना है कि आप विकेट को एसेस करें, और उसके बाद जो है अगर किसी बैट्समैन की बारी लग गई है तो उसको फिर पूरा खेलना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वो वाली विकेट्स नहीं है 200 वाली, आपको थोड़ी सी क्राफ्टी इनिंग्स खेलनी पड़ती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिन बैट्समैन की फॉर्म लगी हुई है तो वो बेशक थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले लें, लेकिन उसके बाद फिर आसान है उनके लिए एक्सेलरेट करना, ना कि जो जाते के साथ ही थोड़ा सा देखा है कि हमने पूरे टूर्नामेंट में इतना आसान नहीं है हिट लगना। कोई चेंजेस आपकी साइड में? जी, 2 चेंजेस हैं, शरून एंड ताहा इन हैं, और जुनेद और अवैस जफ़र ड्रॉप हैं। चलें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू। हारिस, ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा टॉस में रिजल्ट्स के एज फार बात करें, लेकिन हैप्पी है टू बैट फर्स्ट है? जी बिल्कुल, हम बैटिंग ही करना चाह रहे थे क्योंकि इसमें क्रैक्स ओपन लग रहे हैं, मे भी बाद में स्पिन हो जाए, तो इसलिए हम बैटिंग करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा बैटिंग को क्रिटिकली अगर देखें, थोड़ा सा कोलैप्स हुआ पिछले दोनों मैचेस में, तो क्या बेहतरी लाए हैं उसमें? वेल, बात हमने की है और जो मिस्टेक्स किए थे उसको एनालाइज किया है, कोशिश करेंगे उसको रिपीट ना करें। और क्या टारगेट देख रहे हैं सरफेस पे? कोशिश करेंगे 180 190 के करीब हो, तो डिपेंड करने में आसानी होगी। और कोई चेंजेस आपकी साइड? एक चेंज है, शामिल खेल रहे हैं यासिर की जगह। फिट है ये तो शामिल बताएगा। चलें, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Well, news from the center is that Newpur Lions have won the toss, and of the prizes, they've opted to ball first. Yeah, just like any other captain, Imamul Haq, the Nurpur Lion captain, deciding to bowl first. No surprises there. And I've got the former captain, Salman Butt, in the commentary box. No surprises. Bowling first. Yeah, pretty much the pattern of the tournament. Captains preferring to bowl first, although there have been teams who've batted first and ended up winning the game, and that too in convincing manner at times. But it's just the mindset. And here is the team, Allied Bank Stallions for you on your screen. Haris the leader, as he told. Shamyl comes in, and the rest of the side remains the same. They've been pretty good with what they have been up to. They're on the top of the points table, leaders. And Hussain Talat has been their trump card, scoring runs. So has been their captain. And Mohsen lately has been a wonderful addition. And Muhammad Ali has been the pick of the bowlers, along with Usman Tariq. Maaz Sadakat has been in good touch. We've seen lots of talent. He won't be having his regular opening partner, which is Yasir Khan. And the other side, Newpur Lions. They're a very exciting side. Somehow or the other, they've got good bowling lineup. Shahid Musa, Wais Anwar, Amir Yamin also.
They've added Sharoon and Tahaf, just strengthened their batting lineup a little, Salman. That was a missing link probably in the previous game. And also talking about the roughness that is creeping in. So Sharoon can, bowl off spin. So can Taha. He can also spin the ball. And they already have Khushdil, who has done a wonderful job with the ball. So plenty of bowling options over there and good ones. Fast bowlers, spinners, and a good young side this is. No college for them today. They've come to the game. It's a good opportunity for these boys to come here instead of going to the college. It's always a good outing as a student. Sometimes I remember the schools used to take us to watch games, and that is one of the best days and part of your memory. Maaz Sadakat on your screens. He's batted well, looked good in this tournament. And on the other side is another young, elegant left-hander, Shamyl Hussein. Previous outing, just drove one beautifully through the covers and then a rush of blood. And he had to leave. So he needs to stay calm and have a good look at the bowlers and then just keep playing his natural game. Amir Yamin, 127 matches. 105 wickets and no introduction further required for him. A good all-round cricketer. He's been here for a while. Just making sure Mr. Afridi, Faisal Afridi, the umpire, everything is in order. Himself being a first-class cricketer from Sargodha. His partner on the other end is Imranul Aslam, the on-field umpires. Imtiaz Iqbal, the TV umpire. Here's the first delivery of the game. Swing straight away. That's what he does. He swings it in the air, Amir Yamin. He's been doing it for a long, long time now. Salman. Yes, he is capable of swinging the ball both ways. And the natural one is the one that he takes away from the left-handers, brings it into the right-handers. And he's been pretty efficient with that. And that's why sides that play him usually give him the new ball. A slip in place. Newpur Lions had a horrible outing as far as fielding is concerned in the previous game. They dropped 3 chances inside first 6 overs. They would like to forget that. Good run, very good run. And another one. Not one, in fact, not 2, not 3, in fact 4 of them. It's the fielding we were talking about. They started off poorly again, the Lions. Well, the game can be cruel at sometimes. It's a good piece of fielding, good pickup, good throw, hitting the stumps direct. And in the end, the ricochet taking it to the boundary. Good luck for the batting side. Just have a look at this. It was a good piece of fielding. The fielder to back up was in the right place. Just not to be. But the question, Salman, is was there a need of throwing that because Maaz was well in the crease? Oh wow, what a delivery that is. A typical Amir Yamin delivery. Leaving the left-hander. So these modern day fielders rather, they have to throw at everything, regardless of where the batter is. Well, obviously sense should prevail, as you said, whether it was required, but I think it wasn't something which was, confirmed that the batter would reach easily, although he did in the end. But at times, fielders are in momentum. This one is flicked on the leg side, and the fine leg was up in the circle, and this will be another boundary. So, a decent start for the Allied Bank Stallions. On this occasion, Amir just staying in line and costing his side 4 leg byes. Yeah, leg side-ish. That's the trouble with Amir Yamin. He looks to swing it from leg side away from the left-hander, and in doing so sometimes ball it way outside the leg stump. That's the trouble. Pitching outside the leg stump. It's an opportunity again given to Shamyl Hussein. Although Yasir Khan was looking good. He got the starts but didn't convert those starts to a bigger inning. Maybe that is the why they've just rested him for this game. Brought in the young Shamyl Hussein.
who was just given one game. He's got that flamboyance in him. He can be a destructive on his day. Shamyl played for Pakistan under-19 in the World Cup, in the Asia Cup. Looks to be in hurry sometimes, but he's got that skill and talent in him. Yes, it was full there to be hit, but just trying to go a bit too hard. First over ball, it's 10 for none. One change for Allied Bank Stallions. Shamyl Hussein coming in for Yasir Khan, and a couple of changes for Newpur Lions. Sharoon Siraj, Mohammad Taha coming in place of Junaid and Awais. Newpur Lions, just like any other captains, Imamul Haq deciding to bowl first just to get that early advantage. Maybe the captains think there will be moisture early on, they can use that to the effect. Salman, I had to ask you this, you were there at the pitch. Dryness, you said, it has changed. So the batting style will change also. Awais Anwar, 8 matches and early days in the career, 3 wickets so far. Was unlucky in the previous game, had a few drop chances. But he's somebody who's got good potential and someone to look forward to. Talk about the surfaces. Obviously, they're being used day in, day out, back-to-back games. And obviously the groundsmen in this weather are not going to water them much, so the abrasiveness is coming in. You can feel the roughness on the surface. If you put your hand on it, you know that it will start to grip as the tournament grows, and that's where the timing can be straight away, it can be hard to get. So the batters definitely need to adjust. It's not unplayable, but it's just the shot selection needs to differ. And that is the whole point of learning as a batter, to adapt to the conditions. So if spinners come in more, you play accordingly. If you can sweep, sweep. If you can use your feet, use your feet. If you're confident playing with the spin or getting to the pitch of the ball, apply all that. And that's the way forward. It's not unplayable at all. Yeah, it's all about adaptability, as you said. And if you're good enough, if you're at this level, playing best against best, you should be able to adapt. Simple as that. Slip coming out. What a shot! What a shot that is! All the way for a 6. That's Shamyl Hussain for you. I think that is what the captain was referring to earlier when he said Shamyl batayega. So now we can see the talent. And we saw that in the previous game as well when he drove that one through covers. It had class written all over it. And just have a look at this. What I love is the flow of the bat. A clean access to the ball, nothing in between, head still. And he's not a big man, but he's hit a big blow via good technique. Yeah, only if I wish he could convert this start into a big inning. It would be so good, so pleasing to see. Looks like a busy player, always searching for something on the crease. Beautiful start to this inning. As it was in the previous game, he had that glorious extra cover drive. This occasion starting off with this magnificent hit over long on. It's about converting this start into a bigger one. That's it. That's what he needs to learn, Salman. Yes, sir. Just keep batting, young man, and the rest will come. Just have a look at this bat flow. Wow. And in the way, getting good timing. As this one just hurries onto him. Wasn't much space to cut the ball closer to his body. But these days, youngsters, they don't give second thoughts. The modern day batters, they call themselves Gen Z. Another example of a modern day batter.
The captain, Harris. Yeah, but he's showing restraint in this tournament, and he has come up with the goods. Sense has prevailed in his batting. He has all the talent, Harris. And this is good. Rotation of strike. Hit the ball when it's there to hit. Otherwise, just take the one. That's the way to go. So it's a decent start so far. Just a ball to go in the second over. 18 for no loss. And they would need partnerships. Any side over here or anywhere, if you need to build a good total or even in a good chase, you need partnerships. And Stallions have put up good partnerships in this tournament. Eight runs off the first over of Awais Anwar. 2 done, 18 for none. Amir Yamin will continue. 18 runs in 2 overs. They're off to a good start. Allied Bank Stallions, all they need is to convert this start. Slip has gone out. Third is inside the circle. Point is going deep. There's a deep square leg. Fine leg is inside the circle. A couple of boundaries. How quickly it can change the thinking of the captain. That's exactly where it went. That's modern day cricket for you. In your days, it would take lots of days to get that point at the boundary line, Salman. Nowadays, just a couple of overs. Well, obviously, that is a different format you are talking about. The on-field umpires, the match officials, Mr. Imranul Aslam on your screens at the moment, and with him is Mr. Faisal Afridi, who is on your screens. TV umpire is Imtiaz Iqbal. Imranullah is there. Now he's on your screens. This time bringing the ball back in, and Maaz was looking to play the cut, hoping that the ball would go away. A key to success against any sort of bowler for batters has to be how early he picks the ball from the hand. And that is something which is becoming obsolete these days. You need to watch the hand. It gives you a fair idea. Even if you're playing the new ball, the seam direction tells you what the bowler is aiming to do. And the same goes for the spinner. And if you can't watch, if he's hiding the ball, like the great Waqar Yunus used to do sometimes, if the ball is reversing or something, then obviously play the in swing. So this previous stroke that Maaz played was hoping that Amir will be swinging the ball away, but it came back in. So that is why it's very important to watch the hand and then make out what to do. Yeah, also Salman, a swing, yes. And if you're having a close look at the hand, you would be able to tell about the variation also, that what variation the bowler is trying to use. Cuts straight to the fielder though. All these traits these new young batters need to learn. But most of the time what was happening is see the ball and hit the ball. But even for that you need to see the hand also, as Salman is suggesting. Yeah, those little pieces of info give you a good shape as a batter. So you are pretty much aligned to what is coming out of the hand. And that is what gives you better chance of balancing out, maintaining stability, keeping still while the execution of the shot. Everything is interlinked. So the more you know, the better shape you will get. This is short and wide and it's cut hard. The point is deep and Amir doesn't have the kind of pace which would fly off the bat. So this is a safe option for him. And
Imam throughout the tournament has been a proactive captain. And this is the action that we're talking about. Now, as a batter, just have a look at how he puts the seam in the hand. And he tries, just have a look at the seam, the way it goes. So the moment it is released, you know with the direction of the seam which way the ball is going to continue. And that gives you a much better chance of staying balanced and negotiating whatever swing there is going to be on the new ball. So watch the ball is the key. As early as possible is more time for you to react. Brilliant. Wide call. Change in pace by Amir Yamin. Slower one this time. He's a very experienced man. He knows that Shamyl is looking to go after him. Trying different things, changing the pace. A very experienced campaigner. Yeah, for Shamyl Hussein, the point is inside the circle. There's a deep mid-wicket fielder placed for him. That's the difference these two batters play with. Shamyl more of a dasher, more of a six-hitter. This is good. If you're not getting the big one, get a single and get to the other side and keep the strike for the next over. 3 done, 24 for none. Just what our pitch expert said at the pitch, that you might see a lot of spin. So where is it? In the 4th over of the game, we're going to see an off spinner in operation. Sharun Siraj. Just the nature of the surfaces and probably two left-handers. Sharun Siraj is there. He's going to bowl some off spin. 17 games for him. Just the 1 wicket. So I'm hoping that he's a much better bowler than what the wicket column suggests, but early induction, because the pitch looks as if it's going to give some assistance to the slow bowlers. He's still got to put it in the right areas. This was short and easily placed by Shamyl for a couple. He's looking good. He's looking comfortable, and he just needs to just carry on with good momentum and get through those times where he might have to negotiate with good deliveries and capitalize wherever he can. And that is good punching of the back foot. Back up. He's finding the gap all right. This is the second occasion he's just placed it between the two. He's disappointed because he was hoping that Maaz will come back for the second. But I think it was the right decision made by Maaz not to go for the second. Again, some confusion between these two. Well, there certainly wasn't a run over there. He struck it hard. The ball was bouncing off the square and as a result getting quickly to the fielder. So good call from Shamyl. And this is what the game awareness is. There are 4 pitches on the offside. So once you hit a ball, it is going to travel fast to the fielder in the circle. And this has been cut, and once again straight to the fielder. So a bit of frustration when you think that the ball is there and you just cannot get it away for a run. And the fielders are coming in from the circle, all boys on the edge of the circle. As this one has been hit over covers into the gap, a certain boundary for Maaz. This is a good stroke in his range, and this is something we spoke about in the morning on the pitch, playing with the spin. And off spin, ball turning away and just helped on its way by the left-hander in a very elegant manner. Just have a look at this, creating room. And this one was closer to him and there to hit over long, mid-on actually, because it was in the circle. And Maaz gets another boundary as 4 overs are now complete. And Allied Bank Stallions
boundary is being checked by the umpires. They're going to make sure whether it's a boundary or a six. As the well, this seems as if it is touch and go, just gonna hit just like a Yorker, hitting the ground and the triangle together, so that in that case it should be called a boundary. Still waiting, still waiting. They want to make sure that they make the right decision. I'll hand over the mic to Shah Faisal and Tariq Saab just to continue with this. What do they make of it? Just before they come, let me signal it. This is a 6 given by the third umpire, Mr. Imtiaz Iqbal. Really? 4 gone, 37 for none. चांस डायरेक्ट हिट. अच्छा आगाज था अभी तक एलाइड बैंक स्टैलियंस के लिए. सॉफ्ट हैंड से खेला और बहुत ही करीबी मामला था. जितना नजर आ रहा था उससे ज्यादा करीबी, लेकिन अंपायर ने फैसला किया कि थर्ड अंपायर के पास नहीं जाएंगे. 38 पर 1. खुशामदीद तारिक सईद. बहुत शुक्रिया शाह फैसल. अच्छा खेल रहे हैं दोनों. माज सदाकत, उनका ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट है. उछलती हुई गेंद गई विकेट कीपर की जानिब. कल विकेटों की झड़ी लगी रही. बहुत जल्दी पहले तकरीबन पावर प्ले में ही फैसला हो गया था उस मैच का. 4 विकेटें गिरने के बाद, और आज बॉलर्स को अभी तक कामयाबी से महरूम रखा है इन दोनों लेफ्ट हैंडर्स ने. इस बार वाइड से ये बाल बचे. डीप थर्ड पर आमिर यामीन है, खासे फाइन खड़े हुए हैं. दूसरे डीप फील्डर इस वक्त स्क्वायर लेग पर हैं बाउंसर के लिए. और इसे डिफ्लेक्ट कर दिया. बेहद फाइन खेलने में कामयाब हुए माज. 4 रन्स के लिए अच्छा इस्तेमाल में लाए रफ्तार को. खराब लाइन थी ये यहाँ पर अवैस अनवर की. पिछला गेंद उन्होंने पीछे किया. अच्छा लिफ्ट और बाउंस उन्हें मिला. वो लाइन भी अच्छी थी. ये लेंथ तो ज्यादा बुरी नहीं थी, लेकिन लाइन में चूके और उसका खमियाजा भुगता. कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल मास सदाकत का. जब फाइन लेग का फील्डर आपका ऊपर हो तो बिल्कुल एक ये दावत होती है बैटर के लिए. खुश नहीं होंगे अपनी इस गेंद से अवैस अनवर. जगह मिल गई थी, लेकिन बल्ला जो है वो क्लोज होकर रह गया. इस वजह से अपना शॉट मुकम्मल नहीं कर सके माज सदाकत, जो दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं. उनका एतमाद बढ़ता जा रहा है. ये आप देख सकते हैं बल्ला क्लोज रहा, इस वजह से वो शॉट में ताकत आ नहीं सकी. ओवर करेक्शन की थी लाइन की अवैस ने और मौका दे दिया था माज को, लेकिन वो चूक गए. तमाशाइयों की तादाद ज़्यादा नहीं है. शायद यूसुफ हैं, ये फील्डिंग कोच हैं एलाइड बैंक स्टैलियंस के. यहाँ फील्डिंग में तब्दीली हुई है. डीप थर्ड को आगे लाया गया. ऑन साइड में अब 2 फील्डर हैं, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग पर. इसी लाइन ऑफ अटैक जो है वो भी कदरे बदल कर रह गया था. स्टंप्स में अटैक किया था वैस अनवर ने. फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा और इस तरह की बाउंसी पिच हो तो फाइन लेग ऊपर रखकर आप बाउंसर की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि बॉल आप एक गैप दे रहे हैं बैटर को. हालांकि 2 फील्डर रखे हुए हैं. मिड विकेट तो ज्यादातर स्लॉग के लिए है, लेकिन हुक शॉट के लिए
स्क्वायर लेग का जो डीप फील्डर है और अक्सर फाइन लेग के फील्डर को इस्तेमाल किया जाता है। शायद यॉर्कर लेंथ पे ज़्यादा ध्यान हो, उसके लिए प्रोटेक्शन दी अपने आप को अवैस ने। वही फील्ड है दूसरे लेफ्ट हैंडर शामिल के लिए भी। आसानी के साथ एक रन हासिल किया शामिल ने। 5 के बाद 44 पर कोई नहीं। पांच ओवर में 44 रन किसी मुश्किल के बगैर दोनों खिलाड़ियों ने बनाए। मूसा के लिए थर्ड मैन का फील्डर पीछे है और काफी फाइन, और फाइन लेग का फील्डर दायरे में है पहली गेंद के लिए। लाजवाब स्ट्रोक, शायद बल्ले के बीचों बीच से बॉल नहीं निकली, लेकिन इरादा ठीक था शामिल का। हाफ वॉली भी नहीं थी, खिंचे हुए बॉल को ये एरिया चूज किया शामिल ने हिट करने के लिए अपनी तवील कामत का फायदा उठाते हुए। अच्छा खेलते हैं बैकफुट पर शामिल हुसैन, और स्ट्रोक्स जो है वो रेंज आ रही है अब इनके खेल में। आहिस्ता आहिस्ता अच्छी टेक्निक है। पुल करने के लिए गए, यहां पर विकेट का इम्कान है और ये मिल गई विकेट। तीसरी चौथी कोशिश में आमिर यामीन के हाथ लग गई ये गेंद, जिसे टाइम करने से कासिर रहे थे शामिल हुसैन, और अपने पसंदीदा शॉट्स पर ही विकेट से गए। यहाँ खुशकिस्मत साबित हुए आमिर यामीन, क्योंकि जब वो बॉल का पीछा कर रहे थे तो बिल्कुल पीछे की तरफ भागते हुए जा रहे थे, जो कि सही तरीका नहीं है, लेकिन अपने हाथों को सर से ऊपर ले गए और इसलिए इन्हें दूसरा और तीसरा मौका दोबारा मिल गया। शामिल मायूस होंगे इस डिसमिसल से, अच्छा स्टार्ट उन्हें मिल गया था। पिछली गेंद पे भी इसी से मिलता जुलता शॉट खेलते हुए 2 रन हासिल किए। अगर आप यहाँ देखिएगा आमिर यामीन को, तो बिल्कुल पीछे की तरफ भागते हुए जा रहे थे। ये सही तरीका नहीं कहलाया जा सकता, लेकिन अपने असाब पे काबू रखा और दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट में गेंद को काबू कर लिया। शामिल आउट हुए 18 रन बनाकर। एलाइड बैंक स्टैलियंस 46 पर 1। मोहम्मद हारिस आ गए हैं, एलाइड बैंक स्टैलियंस के कप्तान। सिर्फ 23 साल की इनकी उम्र है, 96 मैचेस खेल चुके हैं। स्ट्राइक रेट का जवाब नहीं, एवरेज भी बेहतरी की जानिब माइल है। इस टूर्नामेंट में कंसिस्टेंट नजर आए हैं कप्तानी की जिम्मेदारी के साथ साथ। और मूसा खान ने आते ही ब्रेक थ्रू दिलवा दिया अपनी टीम को, जिसकी जरूरत थी। नूरपुर लायंस ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था, ये सोचकर कि शायद वो जल्दी विकेटें हासिल कर लेंगे। थोड़े से अर्ली मॉइस्चर की वजह से, लेकिन अच्छी पार्टनरशिप की वजह से ऐसा हो नहीं सका। सीधी जगह पैड पर लगी लेग बाई का इशारा आएगा, गलतफहमी पैदा हो गई थी। हारिस अभी अभी क्रीज पर पहुंचे हैं। चॉइस ऑफ शॉट जो है वो शामिल की जरूर उस पर सवालिया निशान उठेगा। ऑफ स्टंप की बाहर की लाइन थी, काफी खिंचा हुआ बॉल था और उसको उन्होंने फैच करके खेलने की कोशिश की लॉन्ग ऑन के ऊपर से। वजन का आगे की तरफ ही रहा शॉट में, जरूर असेस करेंगे, लेकिन आमिर यामीन ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया।
या फिट हैं आमिर यामीन, इससे जाहिर होता है जिस तरह अभी ये गेंद उनके एक हाथ से निकलकर दूसरे की तरफ जाती रही, लेकिन अहम बात ये थी कि करीब रही, उनके हाथों की पहुंच में रही। जो अच्छी चीज उन्होंने ये की कि उन्होंने हाथ अपने ऊपर रखे। पहली अटेम्प्ट जो उन्होंने की हाई कैचेस को, वो अपने सर के ऊपर से अपने हाथों को स्ट्रेच किया और गेंद जब उनके हाथ से निकली तो उनकी निगाहों के सामने रही, यहां भी और यहां पे भी। देखिए उनकी नजरें कायम रही मुसलसल गेंद के ऊपर। अच्छी एजिलिटी उन्होंने शो की। और मूसा की बात करें, ये मूसा का भी फर्स्ट क्लास का सीजन बहुत ही अच्छा रहा है और इस फॉर्मेट में भी बेहतर कंट्रोल और कंसिस्टेंसी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। रफ्तार भी खासी अच्छी है उनकी। अच्छे एरियाज को हिट कर रहे हैं अच्छी रफ्तार के साथ। ज्यादा तवील कामत नहीं है तो स्किडी नेचर के बॉलर हैं। ऑफ द विकेट ये काफी स्किडी हैं और बैटर को इतना टाइम नहीं देते अगर अच्छे एरियाज में बॉल करें। हाँ, अगर इतनी रफ्तार के साथ बाहर बॉल करेंगे और रूम देंगे बैटर्स को तो फिर ये रफ्तार उनके लिए खुद के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। शुरू के मैचेस में इनको विकेटें नहीं मिल रही थी, लेकिन पिछले मैच में डॉल्फिन्स की 4 विकेटें गिराई, उससे पहले भी 2-2 शिकार किए। तो मूसा जो हैं कदम जमा चुके हैं। अब इस चैंपियनशिप में उन्होंने अपनी धाक बिठाना शुरू कर दी। बड़ा इन्हिसार है इस टीम का, नूरपुर लायंस का, अपने फास्ट बॉलर्स पर। बड़ा नाज है इनको अपने कैंप पे। ऐसे कट कर दिया, पर कट कर दिया 4 रन्स के लिए। मूसा की रफ्तार इस बार उनके खिलाफ गई। अच्छा इख्तिताम किया इस ओवर का माज ने। इसके साथ ही निस सेंचुरी भी मुकम्मल हो गई। 51 रन पर एक खिलाड़ी आउट। कभी भी जाती तौर पे मैं थर्ड मैन का फील्डर ऊपर रखने के हक में नहीं हूं पिंडी स्टेडियम में तेज रफ्तार बॉलर्स के खिलाफ, क्योंकि उनके पास बिल्कुल ऑप्शन नहीं रहती डिफेंस की और ज्यादातर तो ये एक अटैकिंग पोजीशन भी होती है। पावर प्ले खासा अच्छा रहा एलाइड बैंक स्टैलियंस के लिए। आगाज में उन्हें ओवर थ्रो का एक तोहफा मिला 5 रन की सूरत में और ये शॉट शामिल ने अपने टैलेंट का सबूत दिया। शाहरुन सिराज के एक ओवर में भी अच्छी एग्रेसिव इंटेंट दिखाई दोनों बाएं हाथ से खेलने वाले ओपनर्स ने। खराब लाइन का उन्हें फायदा हुआ, लेकिन फिर विकेट आ गई मूसा खान के आते ही। शामिल हुसैन आउट हुए, लेकिन पावर प्ले का अच्छा काम किया बाउंड्री के साथ माज सदाकत ने। 51 रन 6 ओवर्स में ये ज्यादा बुरा रिटर्न नहीं है पावर प्ले में जब आपको टॉस जीत के बैटिंग कराई गई हो। खुश दिल शाह जल्दी आए हैं और क्रीज से आगे निकलकर खेला, अच्छी पेशकदमी की और दूसरे रन को भी वापस दौड़ गए। अच्छे रनर हैं माज सदाकत, उम्दा फील्डिंग की। वहाँ पर शायद अजीज ने हर मैच में ही अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे। शायद अजीज गेंद उनके हाथ में हो, बल्ला हो, फील्ड में हो, ये बहुत बाहर जा रही थी लेग स्टंप के। जी, आपने शाहिद अजीज की बात की। ऐसे क्रिकेटर हैं जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं और ये एंगल के साथ बाहर जा रही थी, इसको टर्न होना था अगर हारिस के लिए खतरा बननी थी इस गेंद ने और लेग स्टंप से बाहर गेंद। हारिस की पिछली दोनों इनिंग्स में हाफ सेंचुरीज हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ हाफ सेंचुरीज हैं। टूर्नामेंट के इब्तिदाई मैचों में वो थोड़ा वक्त लेकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खासतौर पर पिछले मैच में उन्होंने बॉल 1 से ही अटैक किया। आज भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि माज सदाकत की मौजूदगी में शायद उन्होंने फैसला किया कि वो टॉप गियर से ही इनिंग्स का आगाज करेंगे। चांस, लेकिन हारिस काफी तेज रफ्तार हैं और कोई झिझक भी हुई नहीं रनिंग बिटवीन द विकेट में। पावर प्ले के बाद फील्ड खुल गई है तो इसलिए जहां बाउंड्री की अपॉर्चुनिटी नहीं है, माज और हारिस
दोनों काफी फिट हैं, काफी तेज रफ्तार हैं, शाबाश रनिंग से हर बॉल को यूज करना चाह रहे हैं। कैच फिर बड़ी शॉट खेलने गए, इस मरतबा गैप में गई है गेंद, माज मुड़े और वही डेंजर एंड पे जा रहे थे, हालांकि थ्रो हारिस के एंड पर आई। रुकता नहीं है यार अच्छी दौड़ विकेटों के दरमियान, वो जो इंटेंट है वो नज़र आनी चाहिए होती है आपकी दौड़ में भी, वही दिखा रहे हैं हारिस और माज, दोनों एक ही टीम से खेलते हैं पेशावर से कायदे आज़म ट्रॉफी के मैचेस में। एक है जगह बनाकर खेले लेकिन रन एक ही मैसर आएगा। ऑफ साइड स्वीपर हैं ताहा, एक्सीलेंट शाबाश शाबाश इस ओवर में बाउंड्री के बगैर गुजर हुआ एलाइट बैंक स्टैलियंस का 58 पर 1। मास सदाकत 28 पर नॉट आउट हैं और हारिस ने 6 रन बनाए हैं। एलाइट बैंक स्टैलियंस बैटिंग लाइनअप काफ़ी लंबी है। नूरपुर लायंस जो है उनकी टीम पिछले कुछ मैचेस से मुसलसल अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रही है। 2 फतूहात हासिल की उन्होंने और एक बहुत ही क्लोज मैच हारे वो। और जब भी हम यहाँ आते हैं सुबह मैच से पहले हम देखते हैं नूरपुर लायंस के जो मेंटोर हैं, बाकी मेंटोर्स की तरह वकार यूनुस, वो बहुत जी जान से मेहनत करते हैं और जैसा आपने कहा उन्हें अपनी फास्ट बॉलिंग पर नाज है, तो उनके पास भी अच्छे खासा एक ग्रुप है टैलेंटेड फास्ट बॉलर्स का। 5 मेंटोर्स, पाकिस्तान क्रिकेट के लेजेंड्स। अंपायर का इशारा देखना होगा। लेग बाय का 1 रन। वकार यूनुस की बड़ी यादें हैं इस पिंडी स्टेडियम से और आज उन्हें ताज़ा करने की कोशिश की खुद इन्होंने। सुबह के वक्त ये यहाँ पर बॉलिंग करते रहे प्री मैच सेशन में। यही इन्होंने ब्रायन लारा को बोल्ड किया था। उस विकेट को आज भी याद किया जाता है, गिर गए थे लारा। और शायद इसी एंड से बॉलिंग कर रहे थे जो मीडिया सेंटर एंड है। लारा को जमीन बोस किया और उनकी विकेटों को उखाड़ा। इसके अलावा यहाँ एक जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच भी था जो पहला टेस्ट मैच था यहाँ पर, और पाकिस्तान की टीम चौथी इनिंग में बहुत छोटा टारगेट डिफेंड कर रही थी। एलेस्टर कैम्बल ने बड़ी पार्टनरशिप की थी, उसमें भी वकार यूनुस ने बहुत तबाहकुन बॉलिंग की थी और पाकिस्तान को मैच जितवाया था। वकार यूनुस वो फास्ट बॉलर हैं जिस पे ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बल्कि जो आलमी क्रिकेट है ये खेल उन पे नाज करता रहेगा, क्योंकि वसीम अकरम और वकार यूनुस ये ऑल टाइम सबसे बड़ा पेयर था, फास्ट बॉलिंग का पेयर। लिली थॉमसन, कर्टली एम्ब्रोस, कोटनी वॉल्श, मार्शल, होल्डिंग की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन वसीम अकरम और वकार यूनुस से इसमें कोई कलाम नहीं कि इन दोनों ने वो तने तनहा पाकिस्तान को जितने मैचेस जितवाए इनके पैर ने कोई नहीं जितवा सका, अपने मुल्क को इतनी फतवाहत नहीं दिला सका मिलकर। बहुत से हारे हुए मैचेस ऐसे जो बज़ाहिर ऐसा लगता था कि पाकिस्तान हार जाएगा, उसमें वसीम अकरम और वकार यूनुस की जोड़ी ने पाकिस्तान को मैच जितवाए। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट को भी उन पे नाज है।
जो स्किल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, जो वेस्ट इंडीज़ का फास्ट बॉलिंग का दौर था जिसमें वो दहशत की अलामत तस्वर किए जाते थे अपने बाउंसर्स और रफ्तार की वजह से, वसीम और वकार की जोड़ी ने उसको ट्रेंड को चेंज किया और स्विंगिंग यॉर्कर्स को जो है गेम में लेकर आया और जो महारत हासिल की वो शायद ही किसी और के हिस्से में आई हो। इस मरतबा थर्ड मैन का फील्डर पीछे था इसलिए लेट खेलकर बैकवर्ड पॉइंट से गैप ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हुए माज सदाकत। और ये जो कॉन्सेप्ट है चैंपियंस कप T20 का और चैंपियंस कप बैरियर टाउन चैंपियंस कप का जो फॉर्मेट है, शोएब मलिक भी मेंटोर हैं, बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की इंपॉर्टेंस है कि जो पाकिस्तान में नया टैलेंट उभर रहा है उन्हें इन ग्रेड्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। यार ये शामिल हुसैन को हम देख भी रहे हैं क्योंकि T20 क्रिकेट के मुतालिक जितना गहराई से ये शोएब मलिक इनको बता सकते हैं, जाहिर है वो कहीं और से इनको तजुर्बा नहीं मिल सकता। सरवकार यूनुस फास्ट बॉलिंग से मुतालिक, सकलैन स्पिन से मुतालिक एक रन यहाँ पर मिल सकेगा। मुसलसल दूसरा ओवर जो बाउंड्री के बगैर गया, इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है इन दोनों बल्लेबाजों को। 62 पर 1। Pragmatic approach from Allied Bank Stallions, posting 62, just losing 1 wicket. Shamyl Hussein in 8 overs. Selectors are present, keeping a very close eye on each and every match. Outside off stump, easy single there. But the approach they have right now, Stallions making aggressive strides. It's important for Lions to think something and put some brake on the run rate right now because they can accelerate. They've got the batting lineup to post a big total here. Ali Yunus with me. Lifted up into the hands, just trying to accelerate. Haris falling for the trap, and Khushdil has picked up his first wicket for the morning. Yeah, that's one way of putting the brake on the run rate, is getting the wickets, which they did. And it's a big one. Talking about the platform being set. It's a very good time to get the wicket off the captain Haris, who can be a destructor by the end of the inning. It was there in his zone, just could not get that force and elevation behind it. Khushdil Shah will give you no pace whatsoever. You have to create your own pace. That's what he tried to do. Lifted it up, but no force, no elevation. And a good catch by Hassan Nawaz. An important time for the Lions to get his wicket. Mohammad Haris will walk back, scoring 7 at 63 for 2. Mohsin now walks in the middle. He's had few good outings. Scored a brilliant 50 the other day with Hussain Talat. He is one to watch for as well. Strike rate of 134, highest 56, got 250s already. It's 13 matches. Got huge potential, and this is going to be an important partnership in terms of how Allied Bank Stallions would divide the run rate phase-wise.
And he's 30 years old, minded, Mohsin. So he's done that grind at the junior level, at the club level. Lovely bowling. So he's Lovely matured lads. and come to this level as a very strong boy, hits them big. Shabash. Sort of a player you need at this time, at this position also. Swept hard. And into the gap. He has announced his arrival in the middle. Shabash, 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 shabash. Yeah, he's been in great touch, Mohsin. Shabash, shabash, Khushi bhai. He knows how to bat. He knows how to bat on different surfaces. This is surface that our pitch expert said maybe you'd like to sweep on, and realizing it quickly and benefiting it from it. Off the back foot. Khushdil is lucky he got away with it. It was there to be hit. But Mohsin, yeah, the way he played that shot had control written all over it. Touch of spin there. Well, he'll enjoy his time out in the middle. And he got here because of this. Khushdil Shah, flat trajectory, no pace on offer, just trying to get the elevation. The bat path was not to keep it down. He got his wicket, and big one for Faris. Allied Bank Stallions, 9 overs gone, 68 for 2. Crowd coming in. It's a gorgeous afternoon here, sunny. They're all in for a treat. It's going to be a good contest between these two sides. Way outside off stump. We'll have to bowl that one again. They've got plenty of batting to follow now. And probably the idea for Mohsin and Maaz would to accelerate even further. Well settled in. They've both got runs against their names. I would like to add more pressure to Lions. And they've got a good approach. I think they've done a really good job sending Mohsin at number 4. Oh no, almost chipping it straight to the fielder. Been very lucky, Mohsin, this time. But it's good that they're giving him an opportunity because he's the man in form. Although they've got Hussain Talat, who's also in good form. Shoaib Malik himself, Taimur also. So realizing that he's in form, just early. Very lucky though. So this is a good opportunity for him again, one more time. Yeah, into the surface. It's just slightly gripping on. And Allied Bank Stallion do realize that Newpur Lions are well sorted in their batting. Their opening partnerships have been brilliant. Khushdil in the middle, and now the other day they did this struggle in terms of their openers, but carried on and recovered really well. So they do know and they do realize that they have to put up a good challenging total. Perhaps that approach of sending Mohsin up the order. And not to forget, they've strengthened the batting lineup in this match also. They brought in 2 batters. Tentative. So they brought in 2 batters in form of Sharoon and Young Taha. Because that was the missing link, I believe, in the previous game also. 1 batter shot they were. So yes, they would have realized it. And maybe 170 to 180 what Haris suggested at the toss. They have to get to 180 plus at least to challenge the Lions. Because they're on a roll, they're on a high, they're winning the games, even losing the games on the very last delivery. So they're playing some quality cricket. So you have to play good cricket to beat them. No matter how many stars you've had, but still you have to play good cricket. Just 2 off the over. Amir Yamin.
protection there. Hasn't conceded a boundary yet. Amir Yamin is quite disciplined and experienced in that area, but probably Mohsin now would be itching to get it going. That is where somebody like Amir Yamin is so important. He can bat at any number. He's flexible there. He can ball at any point in the inning. He's a floater. Can use him anywhere. He's a good fielder. Took a very good catch early on. A very handy cricketer to have at this level, especially in this format. Driven, and driven beautifully. That's the boundary they were looking for. And Mohsin, the man to set the standard up, has brought it. I have a feeling that these conditions, this surface will suit Mohsin, because having played so much club cricket and district cricket, having played on so many underprepared pitches, he would know how to bat on this surface. And he did it with some ease, that lean into it, quality, just timing, pure timing on this. So yes, he will like batting on the surface. And again, but this time straight to the fielder in the deep. Good over yet again for Allied Bank Stallions. 10 overs gone, 75 for 2, and it's time for drinks. Allied Bank Stallions have managed to accumulate 76 on the loss of 2 wickets in 10 overs. Maaz on 32 of 24. Mohsin still out in the middle on 11. Shamyl fell on 18 and Haris on 7. The Newpur Lions, well, they opted to bowl first. Straight away attack was put. Shamyl Hussein, the first one to fall, trying to force that pull shot, and a really good catch from Amir Yamin. This one, the big wicket, Haris, straight into the fielder's hand. Khushdil Shah was on the receiving end. Well, now 10 overs are gone, and one each for Musa and Khushdil. Amir Yamin, Abbas Anwar and Sharoon was pretty expensive, but other than that,
they've managed to pull some momentum back. After 10 overs, we've seen change of gears quite often. Oh, down the track. Undone by a brilliant delivery from Khushdil, turning, drifting in. And Mohsin will have to take the walk back. He will be disappointed. Looked good for his 11. Rose to a good start. Looking to use his feet, getting to the pitch of the ball, and then defending. He'll think about it in the night. Why did he do that? Because Khushdil Shah, he varies his pace. He's somebody who will mix it up, turns the ball, but that didn't turn. I don't think so that turned. It was just hurried onto him, maybe a quicker one. Change in pace, I said. Beaten. Strange sort of dismissal for Mohsin. Scored 11, 76 for 3. After the drinks, straight away, Allied Bank Stallions falling for the trap. Khushdil Shah has been superb so far in his spell, picking up 2 wickets, giving just 13. The man with loads of experience walks in, Shoaib Malik. Those numbers are quite intimidating for any bowler. And a tailor-made situation for him. Lots of experience, you said. Rightly said. 83 50s at in this format. Magnificent. The right man to have in the middle though, wherever he plays. Khushdil Shah managed to get a big wicket. Mohsin down the track but never covered the line. Not sure what he was trying to do. And Khushdil into the surface. Just carried on with the angle. And Rohel did the rest. Down the track comes Shoaib Malik. No worries for him. And a maximum effortlessly done. Yeah, don't mix up with any other cricketer. This is Mr. Shoaib Malik. He'll punish you regardless of what delivery he's facing. Just give himself touch room, use his feet, get to the pitch of the ball, created that zone to swing his arms, and played it all the way for 6. Brilliant. Yes. Just that forward press. He's ready to go. Probably showing Mohsin how it's done. Excellent, boys. Literally dismissed Khushdil. He picked up 2 wickets, but look at that. Just creating a room, good footwork through the line of the delivery. And that is glorious stroke. And again, just shocked himself on this occasion, but will pick up a single. You know, the difference between the two which I see is the clarity in mind. Shoaib Malik was clear that he wants to go after it. He saw it in his zone and went after it. Mohsin was a little confused. He came down the track, used his feet, and then looked to duck it, looked to block it. I think that's the difference between the class of Shoaib and Mohsin. We cannot compare them really. But still, this is learning phase for Mohsin at this level. There's no better person than Shoaib Malik to be learning from at this level. 11 done, 84 for 3. Shahid Aziz now given the responsibility.
He has impressed me in this tournament. He's got some pace, he's an intelligent bowler, got the variations as well, and can handle the pressure, even though he couldn't really finish the game on a winning note for his team. But the braveness of him, choosing the right deliveries, understanding the conditions, was impeccable. He's got a job to do now for his captain. Maaz on 33, Malik with all his experience on 7. And he's an athlete as well. Yeah, very good fielder too. He's quickly making his name, I tell you. People like you are talking about him. That's a big thing. But yeah, he's done well in this tournament. He's regularly taking wickets. And once you get wickets, you get high on confidence. And your rhythm gets automatically correct. So it's a leading wicket taker, by the way. Just been told. Thank you. 85 at the moment. You like to accelerate from here on. Shoaib Malik is there to do it. 170 at least, maybe, Marina. Minimum, yes. Malik was ready. He's too quick between the wickets. But good bowling. It's not easy at this stage. Shahid Aziz, he knows that probably Malik will go after him. Even Maaz has the ability to do so. But probably, I think, when you look at Allied Bank Stallions, how they have crafted this inning so far, they are lagging behind. So they need few big overs. I would definitely like to target Shahid. Lot of protection into the leg side for Maaz. Up and over, but not really. Just lofted it and has given away his wicket. Shahid strikes straight away. Yeah, Maaz was looking at the surface, maybe just holding up a little. Not what he expected the ball from. And he sliced one up in the air. And an impressive catch by Sharoon Siraj at point. Another important time to get a wicket. Yeah, no worries at this end. In the pitched into the surface, no pace whatsoever. He was maybe expecting some pace. That's why he wanted to guide it towards that third area. But he's a smart operator, as you said. He knows how to get wickets. He got another one in this tournament. 34 from Maaz. It's 86 for 4. Newpur Lions are hunting down Allied Bank Stallions. Not making things easy for them to score. Maaz was well settled in. But Shahid Aziz again into the surface. He's been adjusting well to the conditions out in the middle. Pitch is now being reused. Don't really allow that sort of a pace that we witnessed early on in the tournament. Hussain Talat will have a very important role to play. Fuller clipped it. He'll be pushing for the second one. Shoaib Malik really quick. This is something you'll see more often when he's out in the middle. Yeah, very fit, Mr. Malik. He's here, Santarat, because it was bowled into the surface, slow in pace. Maaz was expecting a bit more of pace. Didn't get it because he's a very smart operator. Another thing that is very impressive as far as Lions is concerned, that they're in control. Look at the extras, just 2 wides, that's it, nothing else. Leg buys though. And that's where they don't give those extra runs, don't give away extra deliveries. No wonder they've got Bakar Bhai and Azaz Chima both in their camp. So that's showing in the bowling. And another thing that is showing
Is Barrier Town going global? Barrier Properties to develop a world-class gated community in Dubai South. Super. Slightly discomfort for Hussain Talat, something behind the screens. Is it Shah Faisal there? Mostly he's there at this time. He's the troublemaker. Is there food there? Smart bowling. And bowlers like these, like Shahid, who understands his own game, his own strengths, make things easier for the captain as well. Imamul Haq, he's very vocal with his players, communication is on spot. But if you can bowl according to the field and according to the plan given, I think it makes life easier for a captain, especially in T20. Absolutely. It's up to the individual how he absorbs what has been told to him. I think the Lions bowlers have done a marvelous job absorbing that experience. And that is what is required in this Champions Cup. This is what the Champions Cup is all about. Absorbing the experience, learning from the best. 12 done, 88 for 4. नूरपुर लायंस ने अच्छी वापसी की है इस मैच में। एक मौके पर 63 रन पर सिर्फ एक ही विकेट गिरी थी और अच्छी पेशकदमी एलाइड बैंक स्टैलियंस की जारी थी। वहां आकर खुशीदिल शाह ने विकेट हासिल की। शाहिद अजीज ने भी अच्छा स्पेल किया है। शुएब मलिक को फिक्र नहीं है, स्पिनर के सामने कोई परेशानी नहीं है हमेशा की तरह। और अभी भी यहाँ से इनके पास मौका है क्योंकि तैमूर खान को खेलने के लिए आना है कि जा सकें। 170 के आसपास ये पहुंच सकते हैं अभी भी। जी हाँ, पार्टनरशिप की ज़रूरत है और बैटर्स आए हैं, अच्छा खेले हैं, लगा है कि जैसे बड़ा करेंगे स्कोर, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। कह लीजिए जल्दबाजी करते हुए अपनी विकेट गवा बैठे। और ये अच्छा शॉट है लेकिन फील्डर वहां मौजूद और शरून नॉर्मली एक अच्छे फील्डर हैं लेकिन इस मौके पर कैच पकड़ने में नाकाम रहे और हुसैन तलत को एक जिंदगी मिल गई क्रीज पर। ये वो मोमेंट था जहां पर मैच को अपनी तरफ खींच सकती थी नूरपुर लायंस। ये दोनों एक्सपीरियंस बैटर्स हैं और यहाँ पे विकेट गिरने का मकसद है कि उन्हें भी अपने सर्वाइवल का मसला हो जाता। टीवी अंपायर एक नज़र डालना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इनके पिछला पांव जो है महफूज साहब, जहाँ बिल्कुल, इसलिए ये बाउंड्री गिनती में नहीं आएगी। शुएब मलिक आया ये वार करने के लिए जाएंगे, इरादा यही था। और यहाँ पर क्या ये अपनी क्रीज में आ पहुंचे हैं या नहीं, लगता है कि मुश्किल में है। हुसैन तलत की बॉडी लैंग्वेज से लगता नहीं है कि वो पीछे रह गए हैं, वो कंफर्टेबल लग रहे हैं और एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जैसे होती है। लेकिन उतना ही कॉन्फिडेंस, उतना ही एतमाद में नज़र आ रही है नूरपुर लायंस की टीम। तो देखना होगा क्योंकि ये डायरेक्ट हिट नहीं थी और करीबी मामला हो सकता है। यहाँ पर अशद ज़रूरत है कि ये दोनों बैटर्स क्रीज पर रहें अलाइड बैंक स्टैलियंस को। रिप्ले लगता है कि हुसैन तलत जो है वो पहुंच गए और जी हाँ, रोहिल नज़ीर क्योंकि देख नहीं रहे थे हुसैन तलत को, उनकी सारी तवज्जो जो है वो बेल्स उड़ाने पर थी, इसलिए उनको अंदाज़ा नहीं था। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि हुसैन तलत फुल स्ट्रेच थे और ये बेहतरीन तरीका है, बैट को ड्रैग कर रहे थे, अच्छी टेक्निक है रनिंग बिटवीन द विकेट की और इसी चीज़ से ये महफूज भी रहे हैं। देखिए थ्रू आउट जो है इन्होंने अपने बैट को
ड्रैग किया है और बड़े अच्छे टाइम में क्रीज में पहुंचे हैं. So अच्छी रनिंग टेक्निक. यहाँ शायद टीवी अंपायर ये देखना चाह रहे हैं सलमान के आया कोनी जो है विकेट कीपर की ये तो नहीं लग गई थी, क्योंकि बात यह है कि जब तक बेल्स बाहर ना आए तो आउट नहीं है, चाहे बॉल लगा चाहे कोनी लगी है. तो बेल्स जब बाहर आ रही हैं तब उनका बैट कहां पर है ये मैटर करता है. यहाँ जाहिर है वो तो फैसला तो उसी पर ही होना है, लेकिन क्योंकि कोनी भी अगर लगती है तो उस सूरत में भी बेल्स बाहर आने पर आउट तो दे दिया जाएगा. अंपायर इसी बात को यकीनी बनाना चाहते हैं. टीवी अंपायर हैं आज के दिन के इम्तियाज इकबाल, काफ़ी तजुर्बा है उनका. अभी तक वो किसी फैसले पर पहुंच नहीं पाए. जहां तो नॉट आउट का यहां पर आना चाहिए फैसला. इम्तियाज इकबाल ने वही किया है, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया कि जो किसी टीम को एतराज़ नहीं हो इस फैसले पर. शॉर्ट थर्ड को आगे लाया गया है, डीप पॉइंट पीछे है, ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ. हुसैन तलत ने 1 रन हासिल किया. इन दोनों के दरमियान बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स हुई हैं इस इवेंट्स में. दोनों आजमूदा कार हैं, मिडिल ऑर्डर में फॉर्म में रहे हैं. दोनों बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत वसी तजर्बा है इनका और अच्छी फॉर्म में है इस टूर्नामेंट में. और उसी फॉर्म और एक और पार्टनरशिप की मुंतज़िर है इनकी टीम, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा फंसे हुए हैं. 92 पे 4 हैं, 13वां ओवर है, इसके बाद 44 गेंदें बाकी हैं अगर नो वाइड नहीं होते तो. और उसमें कम से कम ये 170 रन करना चाहेंगे. ये बॉल फ्लिक की है, टांगों पर थी और बड़ा सेफली इसको शोएब मलिक ने खेला है. 4 रन हासिल किए. सो 8 रन बन गए इस ओवर में और अभी ये गेंद बाकी है. और इन दोनों के खेल की यही खासियत है कि ये मिनिमम रिस्क के साथ रन्स करते हैं. रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है, सेफ क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं. और ये गेंद पैडों पर था जो कि खुशदिल दोबारा करना नहीं चाहेंगे यहाँ पर गेंद. अब दाएं हाथ से खेलने वाले मलिक आए हैं, उनके लिए फील्ड में रद्दोबदल किया गया. जल्दी करनी पड़ी यहाँ पर. शॉट खेलने में गेंद स्किड करती हुई आई थी. 9 रन इस ओवर से 97 पर 4. शाहिद अजीज ने आज भी विकेट हासिल की, 13 विकेटें ली हैं. इसे चोटी पर हैं विकेट लेने के एतबार से. पेश रहे हैं मिडिल ओवर्स में. डेथ में भी इनसे बॉलिंग कराई है कप्तान ने. हालांकि नए इस मंजरनामे पर शाहिद अजीज, लेकिन पहली बार इतने बड़े मकाम पर खेलते हुए मुतासिर किया. जी हाँ, बहुत सी खूबियाँ इनमें नज़र आई हैं इस टूर्नामेंट में. अच्छी बॉलिंग की है, मुश्किल मौक़ों पर बॉलिंग किया है. ये देखिए 6 मैचेस 13 विकेट्स, इकॉनमी रेट भी अच्छा है और मोस्ट कह लीजिए कि विकेट्स हैं इनकी, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस टूर्नामेंट के. तो ये एक बड़ा एजाज़ है अभी तक के लिए और पहली बार जैसे आपने कहा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो बहुत ही खुशाइंद चीज़ है ये. चाचिया इसे और बासानी 4 रन पा लिए हुसैन तलत ने.
बड़े एतमाद के साथ खेला गया शॉट और ओवर के शुरू में वार करना ज़रूरी है इस फॉर्मेट में, वही किया हुसैन ने। जी हाँ, और इसी वार के साथ अलाइड बैंक स्टैलियंस के 100 रन भी मुकम्मल हुए। ये देखिए कदमों का इस्तेमाल और एक फ्लरिश और बहुत ही बातमाद स्ट्रोक, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए, गैप में स्ट्रोक खेला और जो एंगल से शायद अजीज बॉलिंग करते हैं उस एंगल का इस्तेमाल किया इन्होंने, विद द एंगल ये शॉट खेला, तो एक हाई परसेंटेज शॉट था ये। जब हम किसी स्ट्रोक को हाई परसेंटेज कहते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि उसमें रिस्क का आंसर कम है और उसके लगने के चांसेस ज़्यादा है। तो सुनने वालों के लिए या यंग क्रिकेटर्स के लिए ज़रूरी है कि जब परसेंटेज क्रिकेट खेलने का मकसद होता है कि मिनिमम रिस्क इन्वॉल्व हो उसके अंदर। तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स की खूबी यही होती है कि वो कम रिस्क लेकर वो बड़े बेनिफिट्स हासिल करते हैं एज बैटर्स, और ये मेरा ख्याल है कि ये सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है इस टीम का जो अभी क्रीज पर मौजूद है। लेग साइड में टर्न किया, एक ही रन मैसर आएगा। आपने पांचों टीमों को अब काफ़ी देख लिया है खेलते हुए। यहाँ पर आज 14वां मैच है। किस टीम की जो अप्रोच है आपको ज़्यादा बेहतर लगी है T20 क्रिकेट की तरफ और इस ज़माने की ज़रूरत के मुताबिक? मेरा ख्याल है कि ये अगर टीमों को आप देखें तो इसमें आपको डिफरेंट ट्रेंड्स नज़र आते हैं। अगर आप नूरपुर लायंस को देखें तो काफ़ी इनएक्सपीरियंस और यंग साइड है। अगर आप UMT मार्कोर्स को देखें तो हर किस्म का तजर्बा, बल्कि बेतहाशा तजर्बा आपको उस टीम में नज़र आता है और बेसिस कवर्ड नज़र आती हैं। अगर आप अलाइड बैंक स्टैलियंस को देखें तो शायद स्पिन डिपार्टमेंट इनका इतना मैच्योर नहीं है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी बेसिस इनकी कवर्ड हैं और मे बी शायद कहीं ना कहीं ये मिडिल में एक ऐसा प्लेयर चाहते हैं जो 20 गेंदों में 50 करने की अहलियत रखता हो, वरना इनके पास भी खासी बेसिस कवर्ड है। एंग्रो डॉल्फिन्स जो है वो अभी तक अपनी प्लेइंग 11 के बारे में श्योर नहीं है कि वो कौन से 11 हैं, क्योंकि मैच जीत नहीं पा रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं वो उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस में कभी कभार टीमें जो हैं थोड़ा भटक सी जाती हैं। हालांकि टैलेंट उस टीम में पूरा है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन और एक अच्छी जीत चाहिए उनको ताकि वो आगे बढ़े इस टूर्नामेंट के अंदर। और लेक सिटी पैंथर्स जो है इस गेंद को थर्ड पे खेला है हुसैन तलत, बड़े महारत के साथ ये शॉट खेलते हैं और अच्छे गेंद को एक रन लेने में कामयाब हो जाते हैं। 14 ओवर्स का अख्ताम, 105 पे 4। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर इस बैरियर टाउन पाकिस्तान चैंपियंस कप का 14वां मैच खेला जा रहा है। स्टैलियंस के ये हेड कोच हैं मंसूर अमजद, काफ़ी मंझे हुए कोच हैं। उस्मान तारिक का हमने नाम देखा था, यहाँ पर फाइनल की जानिब खेलने में कामयाब हुए और उम्दा लेफ्ट शॉट खेला हुसैन तलत ने 4 रन के लिए, दरअसल 6 रन के लिए, और बेहतरीन आगाज इस ओवर का भी। जी हाँ, ये बहुत ही शानदार शॉट और मूव कर गए थे, बड़ी अच्छी पोजीशन इन्होंने बनाई और स्कूप किया इस बॉल को। ये देखिए यहाँ पर अंपायर बाउंड्री को चेक करते हुए 4 रन होंगे। 1 बाउंस बाउंड्री है, लेकिन जैसा आपने पिछले ओवर में कहा था कि ओवर के शुरू में ही बॉलर पे प्रेशर डाल देते हैं और बॉलर जो है वो फिर पूरी ओवर में अपने दिफाई अंदाज में ही रहता है। तो ये एक्सपीरियंस का यही फ़ायदा है जो फर्स्ट बॉल पे अटैक करते थे दोनों, और फिर पैड्स पे गेंद और 2 रन लेना चाहते थे। तो सिर्फ लेक सिटी पैंथर्स पे बात रह गई थी और वो एक ऐसी टीम है जो एक दफ़ा फिर इस रैम शॉट का मंजर, लेंथ बॉल थी और आसानी से उसे पिक किया। सो लेक सिटी पैंथर्स में जब आप बात करते हैं तो ना तो आपको बहुत यंग प्लेयर्स नज़र आते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा मैच्योर, तो ऐसे हैं जो अपनी पीक की तरफ हैं या अपने करियर के सेंटर में हैं। शादाब हो गए, हैदर अली हो गए, बाकी
जो उनके कुछ प्लेयर्स हैं, मुबस्सिर खान हो गए, काफ़ी अरसे से ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट और ए टीम्स और डिफरेंट शाहीन्स की टीम्स का हिस्सा हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं और वनडे का चैंपियंस कप उन्होंने जीता भी है। थोड़ा सा अगर मज़ीद इनको ये बैलेंस क्रिएट कर लें तो ये इस कंपटीशन से प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। से कट किया, शोएब मलिक ने काफ़ी पीछे चले गए थे, पहले से ही शॉर्ट गेंद की तवक्को कर रहे थे। उवैस अनवर आज अपनी पहली विकेट की तलाश में है। ये बहुत देर से इन्होंने दूरबीन लगाई हुई है और इनकी जो काबी नजरें हैं ये मुतलाशी हैं। आज ये कुछ क्या क्या ढूंढना चाह रहे होंगे इस वक्त कप्तान? बड़ा दिलचस्प सवाल है, इस पे आते हैं अभी। देखिए मैच तो सामने हो रहा है और बहैसियत कप्तान उसकी हर चीज़ को जानते हैं, लेकिन शायद दूर किसी को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इधर देख रहे हैं कि तारिक साहब इधर बैठे कमेंट कर रहे हैं कि नहीं, वहां से तो दूरबीन ही देख सकती है आपको। ये देखिए कुछ डायरेक्शन भी इसी तरफ है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये डग आउट जो इनका है वो इसी तरफ उसका है। सत्ताईस रन की पार्टनरशिप हुई है और अभी ये इस पोजीशन में है क्योंकि 31 गेंदें आनी हैं, तो इसमें ये 55 से 60 रन जो हैं ये बनाने में कामयाब हो जाएं। और शानदार तरीके से खेला। इस बार दो फील्डर्स मौजूद थे शॉर्ट थर्ड पर, लेकिन दोनों को बाइसेक्ट किया हुसैन तलत ने। इस ओवर का आगाज चौके से और इख्तिताम भी 117 पर 4। बहुत ही शानदार स्ट्रोक के साथ एंड किया है हुसैन तलत ने पिछला ओवर। खिलाड़ियों का भरपूर इस्तेमाल, यॉर्कर लेंथ का बॉल था और उसको प्लेस किया उन्होंने। अलाइड स्टैलियंस का ग्राफ मिडल में आके ये विकेटें गिरी हैं एक के बाद दीगरे, और उसके बाद फिर ये तीन आपको बड़ी मारते नजर आ रही हैं। मूसा खान आए और शोएब मलिक ने प्लेस करके इन्हें 2 रन बासानी हासिल कर लिए। और देखिए बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं और वो इसी किस्म के स्ट्राइक रेट पे उन्हें रिस्क लेके इस तरह का स्ट्राइक रेट लाना पड़ता है, लेकिन इन 2 प्लेयर्स की खासियत ये है कि आपको रिस्क का आंसर नजर नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं लगता कि अभी आउट होने लगे हैं। और स्ट्राइक रेट इनका भी जो है 140 के पास है। मंसूर अमजद इस गुफ्तगू में महव हैं अपने स्टाफ के साथ। इस बार नो बॉल होगी और एक ही रन बनेगा। अंपायर इमरानुल्लाह का इशारा, फ्रंट फुट का नो बॉल और हुसैन तलत के लिए एक फ्री हिट का तोहफा। देखते हैं कि कबूल करते हैं कि नहीं। ये साफ लग रहा है कि पांव
मूसा का आगे निकल रहा था। आज काफ़ी तेज़ स्पेल किया है मूसा ने, ये इनका दूसरा है। यहाँ क्योंकि शुएब मलिक ने पहली गेंद खेली थी इसलिए फील्डिंग जो है वो तब्दील की जा सकती। हुसैन के लिए लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग है। शायद स्लोअर बाउंसर करना चाह रहे हैं जो फील्ड इन्होंने लिया है। नहीं, फुल गेंद किया और बैटर की रेंज में थे। खुशकिस्मत रहे कि बॉल सीधी फील्डर के पास गई है, क्योंकि जो प्लान था इनका, शायद इन्होंने डबल ब्लफ करने की कोशिश की बैटर को। हुसैन टाइम नहीं कर सके इस बॉल को, हालांकि इसको सिर्फ प्लेस भी कर देते थ्रू द ऑफ साइड तो 4 रन हो सकते थे। लेकिन ये भी एक अजीब माजरा है कि जब आप फ्री हिट पे होते हैं तो आपका दिल यही होता है कि आप जोर से हिट मारें, लेकिन इतने तेज बॉलर की पेस को भी बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिड विकेट को अब आगे लाया गया। ऑफ साइड में 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर हैं और इसे पुल करने के लिए गए और ये शानदार छक्का इस बार एंगल को भी काम में लाए हुसैन तलत। शॉर्ट गेंद के पहले से मुंतजर थे, अच्छी हिटिंग, बहुत ही आला स्ट्रोक, ऑफ स्टंप की तरफ गए और पूरा पिवट किया और पेस का पूरा इस्तेमाल किया इस शॉट में। बहुत शानदार शॉट, एंटिसिपेट कर रहे थे इस लेंथ को, देखिए, और पूरा घूमे हैं इस शॉट के साथ और इस पेस को पूरा इस्तेमाल किया उन्होंने। और बैट का जो एंगल था वो भी नीचे से ऊपर की तरफ था, यानी कि उनके जहन में ही था कि इस गेंद को छक्का ही मारना है। बहुत ही आला एग्जीक्यूशन हुसैन तलत की, शानदार बैटिंग। जहाँ पुल से ज्यादा ये हुक शॉट था हुसैन तलत का। एक बार फिर मुंतजिर हैं मूसा के। यहाँ 1 रन का और इजाफा। एलाइट बैंक स्टैलियंस की टीम जो है जिस वक्त इनिंग्स का उन्होंने आगाज़ किया था वो 160-170 की फिक्र में नहीं थे, इससे ज़्यादा चाहते थे, जो कि अच्छी सोच है। लेकिन अब यहाँ से ये कहाँ तक पहुँच सकते हैं? 2 सेट बल्लेबाज इनके विकेट पर मौजूद हैं, अभी 4 ओवर्स 2 गेंदें आना बाकी हैं। विकेट अच्छी है बैटिंग के लिए। देखिए, अगर ये 2 खेलते रहते हैं तो 10 रन तो ये ओवर में कर ही रहे हैं लगभग, या इससे ज़्यादा। तो 170 बनते हैं अगर ये 10-10 के औसत से आगे चलते हैं, और अगर थोड़े ज़्यादा कर लें 12 या 14 पे तो 190 तक भी जा सकते हैं। बात पार्टनरशिप की है, अगर पार्टनरशिप लगी रही तो 180-90 तक जा सकते हैं ये लोग। यहाँ पर पार्टनरशिप की बात की, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ दिया मूसा खान ने। कवर पे कैच आउट हुए शुएब मलिक, जोर से हिट लगाना चाहते थे लेकिन इसको प्लेस नहीं कर पाए। अच्छा कह लिया हसन नवाज ने, कवर पोजीशन पर वो मुकम्मल मुस्तैद खड़े हुए थे। शुएब मलिक ड्राइव करने के लिए गए, पूरी तरह उनका जो पूरी तरह प्लेसमेंट नहीं मिल सकी। ख्याल बुरा नहीं था शुएब मलिक का, उनने बनाया 22, 128 पे 5। तैमूर खान जिनको बैटिंग के ज़्यादा मौके मैसर नहीं आए, आज अभी खासा खेल बाकी है इस इनिंग्स में, जब उन्हें मैदान में आना पड़ा मलिक के जाने के बाद। मूसा खासा जल्दी में थे, अभी बल्लेबाज तैयार भी नहीं थे, इसलिए अंपायर इमरान असलम ने उन्हें वापस किया। क्या पहली गेंद पर यॉर्कर करना चाहेंगे? लेंथ से आए और रन लेने का मौका दे गए तैमूर को।
अच्छा ओवर मूसा का, जिसमें उन्होंने बेहतर कमबैक किया 129 पे 5। Very animated. The captain of Newpur Lions, Imamul Haq. He's been in some good form, batting and captaincy both. Awais Anwar for his last over. Every time Marina Iqbal, ABL Stallions have built up a partnership, they've somehow able to manage, break it, just like this. Yeah, that's a speciality of Nurpur Lions bowlers, and you have to give credit to them. Musa on that occasion was well aware what the strengths are of Shoaib Malik. Didn't really give him some room to maneuver with. Hussain, his innings will be very crucial. Just not to forget when these two teams faced each other in this tournament early on. Lions couldn't really chase down 162. They fell 12 runs short. So that's probably one thing in Stallions' mind, that if they can post anything beyond 160, 165 or even 70, they'll be pretty secure. But on the other hand, Newpur Lions, they have to make sure that even with the sort of batting they have, they would like to keep them somewhere under 150, which is going to be a hard task with Hussain in the middle. Yeah, they'll have to bowl really well to keep them under 150, because Hussain Talat is in some red-hot form. And Taimur has been given another opportunity. We haven't seen much of him in this tournament. He would like to make a name for himself. We're playing a little cameo here, 15 to 20 runs with Hussain Talat. But they're a very good bowling side, Newpur Lions, you have to say this. Everybody knows the role. They know how to pick wickets. Slower one, chipped him. Not quite carrying to the fielder, just one more run. Singles won't hurt Lions. It's the boundaries that matters. And it's up to Hussain Talat to get the most of the boundaries from here on. Yeah, he's played many innings in these sort of conditions, in these scenarios, especially against death bowling, which Anwar, Shahid Aziz, even Musa, they all are pretty decent death overs bowlers. So Hussain Talat is used to what's coming up to him. Oh, it's in the gap. 2 is the call. Hussain Talat is going to come back for the second quite easily. That's where he's so dangerous to Hussain Talat. He can hit big boundaries. He can find gap. And the form he is in, he's not missing out on anything. He's lost somewhere. Imamul Haq. Confused. What happened there? Maybe not happy with the fielder. Everyone is just hurrying up. Maybe are they late in over rate? Maybe that's the reason. Slower one again. Chance at the non-striker. Has he hit it? Yes, he has. Umpire is definitely going to have a look at it. He's going to refer it to the third. He looks disappointed. He was out of the blocks pretty quickly, Taimur. No call whatsoever from Hussain Talat. It went straight to the fielder. Let's see if he's back and home. Imtiaz Iqbal will have to do some work here. Hassan Nawaz with the direct hit. I think it's out. It's out. Bait took a little bit time to get off. Yeah, that's out, I guess. The bail is off. Here, maybe, yes. Short of the crease. He's almost halfway back to the dugout. He knew it. Yeah, he's gone.
Smart work from Hassan Nawaz. Just taking his time and making sure that he dislodged that bail in time. Taimur gone on 3. 6 down now, Allied Bank Stallions on 134. But they've got a pretty long tail. ABL Stallions, you can tell by the numbers of Ubaid Shah, just 4 runs in 6 games. Suggests that he's not in the team because of his batting talent. But he's got a job to do, 18 deliveries still to get. He has to stay there with Hussein Talat. Shahid steaming in. That's a good start by Ubaid. Yeah, he can bat. He's worked on his batting skill as well, can hit big. But this is what happened. Not sure where Taimur was going because there was no initiative from Hussein Talat. Straight into the hands of Hassan. It took a while, but made sure that Taimur was out. You can see Hussein Talat saying no, and he was quite down the track, stranded himself. That's the trouble with the non-strikers and batter. Anyone who's batting, they back off too much, and anytime the ball is hit to the fielder, hit it hard, there's always an opportunity. Slower one. 2 is the call again from Hussein Talat. Ubaid Shah is coming back for it and completing it with some ease. That's good approach from Hussein and Ubaid as well. Good bowling from Shahid. They have still managed to pull the reins back in. They need to work hard, Hussein and Ubaid, to get those boundaries into the surface. No pace on offer, but have a look at that. Ubaid knew that he was running towards the danger and had to hurry. Most importantly, Hussein is on strike now. Slower one again, chance again. Oh, deciding against it. Young Taha at point. This is good bowling, just mixing it up. Into the pitch delivery, slower ones by Shahid. Very, very sensible. Yeah, it's good captaincy and good bowling as well. They've covered all the strength areas of Hussein Talat. They're dropping it short, asking him to put force behind his shots. Leg side is covered. Straight down the ground, straight to Imamul Haq, who does well. Well done, well done. It was hit hard from Hussein Talat. Unfortunate that he did not get the gap. And it was Imamul Haq who is one of the safest fielder around. Look at it, the awkward bounce. Had his body behind it. Good work. And how bad he can go big. Normally he clears his front leg, likes to slam it towards that mid-wicket cow area. But he is up against Shahid Aziz. Bang! That's a biggie. That's into the stands. Who said Ubaid can't bat? I did. I take it back. That's a fantastic hit. Well, that's the area. He clears his front leg. And he's already in a good solid base, waiting for that length. Shahid Aziz, I think he hasn't bowled and hasn't seen much of Ubaid. But this is his favorite zone. Crunched straight out of the middle of the bat. I doubt anyone was expecting this. Slower one, other than Marina Iqbal. Nobody was expecting Ubaid Shah to go big like this. It was in his zone. That's where Shahid faltered. 18 done, 144 for 6.
Good crowd in. That's what we've seen in the last few days. People have come in numbers. Just warming up this tournament, coming towards the business end. Every game is very important. Going down to the wire. He's appealing for it. He's appealing for it. Musa is certain. But the person who matters is not. Even Ruhail. I think only Musa was the one who went up for it. Well, Hussain Talat, he needs to do something different. He needs to come up with his innovation, because right now he's batting according to what Newpur Lions have planned for him. Just trying to create some room, wanted to go behind square into the leg side. Now change in field. 45 is pushed back. We've got deep fine leg, deep square leg, deep mid wicket, long on. Third coming in. What he can do is just probably step towards the leg side and play a ramp shot if it's short. Again, it was hit hard by Hussain Talat. He's furious that he didn't find the gap. Rightly so. It was there to be hit, was in his zone. Yeah, but what he's done earlier, with same sort of length and delivery outside off him, slightly outside off him, he just nudged it into the gap with third inside the circle. Slamming it hard, it did not work. All he needed to do was just guide it between the gap, between third and point, and would have earned that boundary rather than trying to hit hard. Catch it! It's not going to carry to the fielder at deep cover. Shasib, the fielder there. This is good batting by Hussain Talat though. He's the lone warrior. He understands that he's the only one who has to get most of the runs. Ubaid Shah started off brilliantly. Can he just swings one or two more just to ease up pressure from him? 145 though. Third is back. They've got the leg side covered, but I think the idea is to keep the ball away from him. Wide Yorkers by Musa. And that's a wise way to go, because Ubaid, anything within the stumps, he'll put it away. Swings it down the ground for a boundary. Ubaid Shah is proving a point here. Proving me wrong, certainly, with his quality shot making. I just told you, anything within the stumps, he'll put them away. Musa, I'm not sure he had the third back at the boundary. Wider Yorker would have made more trouble. But he's already settled in with a wider base, Ubaid Shah. Anything in his zone, he can swing hard. Imamullah was furious just when the ball got past him. Slower one. Oh, what a shot that is. What a swing of the bat. That's a huge hit. That's massive. That's the biggest that we have seen so far in the tournament. Ubaid Shah. I'm so sorry. Well, he's out there proving his mettle. Again, that wild swing, the base. Such a spectacular hit that is. Now, Musa, he needs to learn, he needs to understand this is his natural swing. You cannot afford to bowl him within the stumps. Third comes up now. We've got long off in place. Oh, that's out. Musa with the reactions. Shahid Aziz, the fielder. I think Ubaid has done well. He's played his role. He's not going anywhere. A few words from Musa. But that's a fantastic effort from Ubaid Shah. Yeah, 11 already off the over. But Musa this time getting the last laugh. Ubaid had to go big. That's what his role is. Just slightly into the body. Couldn't really extend his arms. Thick edge straight to Shahid Aziz, who does well. But a cameo coming to an end.
Some entertainment being provided by Ubaid Shah, gone on 17. Allied Bank Stallions 7 down on 155. Right, Amir Khan in at number 9, 7 runs in his career. I'm not saying anything about these young boys. They all can use a long handle and prove me wrong. Just as Ubaid Shah did in the previous over, he smacked Musa all over the park. I'm not going on these stats, no numbers. More importantly, it's Hussain Talat on strike for the last 6 deliveries. Oh, that's done well. Brilliant cricket. Very good from Hussain Talat. Got the boundary. What a start to this last over. Yeah, Hussain Talat needed to step out of the box because all his strength areas were covered. He is a very proactive batter. Understood the length Shahid was probably going to bowl. And he knew exactly where the fielder was. Just waited for that delivery. There was no pace on offer, but he did well to get a connection. Boundary of the first delivery. Pressure on Shahid Aziz now. Trying being too predictable. Bowling those slower ones into the pitch. Hussain Talat is too experienced and smart to realize it. Fine leg now back on the boundary line. Slower one again, pulled. Hassan does well, just restricting them to one. Oh, Hussain Talat, what are you doing? I think that's a run out on both ends. He's given it on one end, but he's going to check it on the striker's end also. Because that's more important. That's where Hussain Talat was running towards. I think it's poor from Amir. It's the last over. You need Hussain Talat on strike. Regardless of it's your danger end or his, it was his call. He wanted that strike back. Amir should have been backing him. He just stood there inside the crease, and that's why he's furious, Hussain. You need to understand the game situation. Amir should have gone. But Marina Iqbal, this was just the second delivery of the over. But the desperation that Hussain Talat showed, that as if he was facing the last delivery. I think the ball went straight to the fielder. It was just a suicidal run. Either one had to go out. Still waiting. Which end? Oh, that's very close. That's smart work from Raheel Nazir though. But doesn't get any closer than this. I think it's Amir Khan out on the both ends. Have they crossed, Marina Iqbal? Imtiaz Iqbal, tough work. That is mighty close. Is it going towards Amir Khan? Silence from Marina Iqbal also. Out, yes, but which batter? That's the question. Out, yes, we all know that. Say something, Marina Iqbal. Well, it's a tough decision by Imtiaz Iqbal. But yeah, with the rules, I think probably with the new rules coming in, maybe Hussain Talat will have to take the walk. Let's see. After so much confusion, Amir Khan has been given out. Let's have a look how. I think it wasn't a bad call. It's the last over. You need to be pushing pressure on the fielders. Just look at that. He was quick. Hussain Talat was out of the blocks. Amir now back in the hut.
without scoring and facing any delivery. Allied Bank Stallions 8 down on 160. "27 runs in 27 matches for Muhammad Ali, highest of 11. Right, 4 more deliveries. Muhammad Ali to face Shahid. Jokar, that's good bowling. Very good bowling. Hussain Talat even now was halfway down the track before it reached the fielder. Back on strike on 38 of 27, 161. That's how it happened. Straight away, running hard. Hussain Talat wanted the strike, never considered any call from Amir. And he was furious, but on the both ends, there was a definite run out. Let me tell you, had Amir Khan ran, it would have been Hussain Talat to get out. In a way, it's good for him. Yorker, that's hit hard, really hard for 4, I guess. You'll have a look at it again. But that was a hard hit from Hussain Talat. Yeah, into his area, into his arc. Hussain Talat pitched up, just slightly clearing the front leg. Just bounced inside the boundary. Hussain Talat, that's why Allied Bank Stallions want him to be on strike. He's moved to 43, the man in form for ABL Stallions. Imtiaz Iqbal, the third umpire, in action again. 4 runs given. 2 more deliveries. He has a good chance of getting to his milestone. 50, that is. Hussain Talat. Wide outside the off stump, wide signalled. He's trying to keep the ball away from Hussain Talat. Have to bowl that again. And this is good initiative to look forward to. Bahria Town Properties going global. They are to build a world-class gated community in Dubai South. 2 more deliveries to go in this over. Up in the air, field up, makes no mistake, takes it. It's that man again, Amir Yamin. He's been very good in the field today. Hussain Talat, after playing a little cameo, a fantastic inning of 43 of just 28 deliveries, had to go big. Being appreciated by young Taha. Disappointed though, maybe was looking to hit it squarer than this. Yeah, into the surface. But this time the line wasn't correct to play that shot. Wanted to slam it over, long on probably. Got a thick slice and another good catch from Amir Yamin at a very crucial time. Hussain Talat with a good handy innings of 43 of 29 deliveries. Back in the hut now. Allied Bank Stallions 9 down on 166. The mystery man, Usman Tariq, to face the last delivery of the inning. 166, already a good total. How many more can they add on this last delivery? Shahid, a couple of wickets for 33 runs. Long off in position, finally coming in. Square leg, mid-wicket, long on, all in place. Deep cover also. Third inside for the last delivery. Two is the call. They should be able to get that. They have the opportunity to come back for 3. Usman Tariq is trying, but he's never going to reach that end. And that's a run out on the very last delivery.
They've been bowled out on 168 on the very last delivery of the inning. They're going to have a look at the boundary check. Imam did well. They'll be happy with it. 168 if it's not a boundary. Imamul Haq, he does well. Saving 2 runs in the end for his team. 168 it is. Shahid Aziz with the last over giving 13 runs. Allied Bank Stallions, they'll be pretty happy with it. Newpur Lions now will have to do the work with their batting. They've got plenty of big names and have been in good form, but this is going to be a challenge against Allied Bank Stallions bowling lineup. Yeah, Allied Bank Stallions were off to a good start courtesy to Shamyl and Maaz. Then lost a bit of a way when Haris, Mosa and Shamyl, they went in quick succession. It was Malik and Hussain Talat who steadied the ship in the middle. Then again, by the end of the inning, they lost few wickets too. But Hussain Talat, most importantly, stood there till the end. Scored 43 runs off 29 deliveries and got the team total to 168 in their allotted 20 overs. Newpur Lions did well as a bowling unit. 3 for Musa, pick of the bowlers, 2 each for Khushdil and Shahid. And they managed to get wickets at crucial time with short intervals and kept things down for themselves. Right, Mr. Shah Faisal, who do you have with you? Ali Yunus, thank you very much. I've got Musa Khan alongside. 3 खिलाड़ियों को आउट किया. मूसा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में. फर्स्ट क्लास क्रिकेट से अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं. मूसा, वेल बॉल्ड टुडे. कैसी थी आज कंडीशंस? सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मैंने परफॉर्म किया. और कंडीशन ग्रिप हो रहा था बॉल, स्लो वन वेरिएशन काम कर रही थी, लेंथ बॉल नहीं इतना आसानी से हिट हो रहा था, तो वही मैंने किया. और ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कंडीशंस चेंज हुई हैं. पहले ज़्यादा पेस एंड बाउंस था, अब थोड़ा जो है वो बॉल फंस रहा है, ग्रिप हो रहा है. जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पिचेस यूज्ड टू हो गई हैं, इसलिए तो ग्रिप भी हो रहा है. और जो मेरे ख्याल से लेंथ बॉल जो है ना, वो काफ़ी इफेक्टिव है इन पिचों में, क्योंकि पिचेस पिंडी की ऐसी होती नहीं है. मगर इस सीज़न में पिचेस में थोड़ा सा बॉल ग्रिप भी हो रहा है और लेंथ पे बॉल इतना आसानी से हिट भी नहीं हो रहा. शायद ठंड है और काफ़ी क्रिकेट हो रही है. और काफ़ी क्रिकेट से बात करते हैं. फर्स्ट क्लास से आप अच्छा करते हुए आ रहे हैं, बड़ा अच्छा आपका एक तरह से कमबैक हुआ है. 1-2 सीज़न क्वाइट गए थे, तो आपकी बॉडी कैसी है, स्पीड वगैरह, रिदम के बारे में बताइए. जी बिल्कुल, बॉडी तो बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि सीज़न खेलता हुआ आ रहा हूँ, रिदम लगा हुआ है और यहाँ पे भी उसी तरह से परफॉर्म हो रहा है जिस तरह मैंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में किया. जल्दी से बताएं माइंडसेट का चेंज. 4-डे क्रिकेट, ग्रीन पिचेस, रेड बॉल से यहाँ पे बैट्समैन आपके पीछे थोड़ा लेके आए हुए हैं, कैसे माइंडसेट चेंज करते हैं? 4 डे में यही होता है कि आपने आउट करने होते हैं और थोड़ी सी लेंथ आगे करनी होती है. और T20 में बिल्कुल ही चेंज है, थोड़ा सा आपने मतलब ओवर निकालना होता है किसी तरीके से ताकि आपको हिट ना हो, तो करना पड़ता है ऐसे. चलें, बहुत अच्छी बॉलिंग की आपने. ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट. Thank you Musa. Thank you. And it's back to you guys upstairs in the comm box. Thank you, Shah Faisal. Yeah, Musa has found his rhythm, courtesy playing some first-class cricket. Now getting the rhythm in this tournament has been brilliant throughout. Right, the highlights of this inning, Allied Bank Stallions. They started off with some style. They got some extra runs early on. Shamyl looked good, played some strokes, played some quality shot. That 6 was magnificent over long on. He was looking good for a while, playing those shots. Maaz Sadakat carrying his form. He's playing some great strokes. That area that he chooses, some quality strokes, and those were helped by some average bowling early on. And then this happened against the run of play. Shamyl Hussein lost his wicket. A very good catch taken by Amir Yamin. And then Maaz Sadakat looked good, kept on hitting boundaries, but was losing partners on the other end. Khushdil Shah was a bit of a surprise package, getting a couple of wickets. Mosa and Shoaib Malik, they played well in the middle, but it was Khushdil Shah and Amir Yamin also went for some runs. Some average bowling. Mohsen went cheaply, that missed the straighter line. Shoaib Malik with his all-experience came charging down the track from the ball 1, and with Hussain Talat on the strike, they created a partnership they needed. That was the wicket. Shahid Aziz actually
came in and straight away managed to get the wicket. There was a good chance, a hard one, but was put down, which gave some momentum back to the Stallions. They played well, took the attack back to Newpur Lions bowlers. Some innovation to be seen. This was classy from Hussain Tallat, just using the pace, and with his hard-hitting abilities, he came in. This good delivery couldn't really capitalize on it. Shoaib Malik went back to the dugout. Hussain Tallat wanted that second run. He wanted the strike back to get some clean hitting. Ubaid Shah coming in and joining to hit some hard earned boundaries against Musa. That was an expensive over, but Musa had the last laugh. Big slice over third. Hussain Tallat had to improvise, courtesy of good bowling from Newpur Lions, into the surface, and this was the run out. Probably on the both ends, but Amer had to take the fall. Hussain Tallat continued his good form, attacking and managing to get runs in the death overs. This one, big blow, probably for the boundary. The target they managed to put up is 169 for Newpur Lions. Right, let's have a breather. When we come back, we'll have run chase ready for you. What a shot that is! All the way for a six. This one has been hit over covers. Lifted up into the hand, trying to accelerate. Harid falling for the trap. Swept hard and into the gap. Driven and driven beautifully. Up and over, but not really. Just lofted it. कवर पे कैच आउट हुए शोएब मलिक, जोर से हिट लगाना चाहते थे लेकिन इसको प्लेस नहीं कर पाए. ये शानदार छक्का, इस बार एंगल को भी काम में लाए हुसैन तलत. Hello, check 1 2 3. Hello, check 1 2 3.
Welcome back to Rawalpindi Cricket Stadium. Match number 14 of Barrier Town Champions T20 Cup, Allied Bank Stallions versus Newpur Lions. Well, this is what happened earlier on. Allied Bank Stallions, having been put into bat by Nurpur Lions, has put up a formidable 168 in their 20 overs. Not a single half century in the card, but Hussain Talat once again continuing with his good form was the top scorer with 43. Maaz Sadakat, also the form man, chipped in with 34. Few lusty blows towards the end by Ubaid Shah saw them close out on 168. Three wickets for Musa, 3 for 32 his return, 2 apiece for Khushdil and Shahid Aziz. Just the 10 extras and 168 they restricted Allied Bank Stallions to. The target will be 169 and we're in for an exciting run chase. Imam ul Haq and Hassan Nawaz, the two openers. Imam, very experienced, that strike rate is on the up all the time, never an issue with his average, he's very prolific. 21 half centuries, he would like to correct that and get a century into his credit. Time, Hassan Nawaz, 18 games, 350 runs this tournament. He's been in very good form. Just the 1 half century. As they say, if you're in good form, you need to cash it in. And today's another opportunity for this tall right-hander. Time to say a very warm welcome in the comm box to former Pakistan skipper Salman Butt. Jazakallah. Thank you, Shaji. It's Ubaid Shah. Early days in this T20 career, 6 games, and probably this is the 6th one. And he's going to take the new ball against the very experienced Imam ul Haq, who has been in great form in this tournament. As umpire Irfanullah calls play. Straight away worked off the pads and easy couple. So off and running, Newpur Lions. Talking about the good form of Imam. His highest is 65 in this tournament. He's got scores of 45, 43, 28 as well. He'll be looking to guide this run chase. Required run rate at the beginning of the innings, 8.42. Which is not considered very high by modern day batters. Immediate change in the field. Slip has come out to mid-wicket. One leg is up in the ring. There's a deep square leg. And a third man. Extra pace, extra heat from the youngster. Yes, well bowled that one. Flew off the pitch. And he can be very slippery. And a new ball. We have seen bowlers create issues for the batters. I know it's not a very big total, but I still would like to see a slip in place. It could have been very close, the last ball. Soft hands, chance. Ubaid was quick. It must have been very, very close. I think Hassan was gone for all money. He had to put in the big dive. This is all action start to this run chase. Straight away action there. Drop and run, and it was Ubaid Shah who, after his follow through, was very quick to get on the ball and nearly ran out Hassan Nawaz, who's the one man in form for Nurpur Lions. And in the end, good cricket. The dive coming off by the batter, although the bat came out of his hand and he just had to dive all on his own. But he's a tall boy. He's got long legs, long steps. Impressive how quickly Ubaid got rid of the ball. Yes, and has been one of those players who really enjoyed the bounce here.
Have a look at this. How quickly Ubaid releases the ball. Great athleticism there from Ubaid Shah and Hassan both. In the end, could have been curtains for the opening batter without facing a ball. Fortunately for him, the ball didn't hit the stumps. Have you ever been dismissed being an opener without facing a ball? Do you recall anything? Yes, I have been. Game. Who was the culprit? Well, what happened was that there was a drive down the ground and the bowler's hand, the ball touched the bowler's hand and I was on non-striker's end. So nobody was the culprit. It's just one of those things. Once again, well played by Imam on the back foot, making sure that he plays the ball with soft hands and good understanding between both the batters. Yeah, the one at the non-striker end is even the unluckier one. You actually cannot blame anyone. But yeah, those singles. Now I see the fielders in the 30-yard ring, especially the one in the cover, is quite in. And having seen the batters drop and run, got to be better anticipation in trying and prevent that single. Abad is bowling hard lengths. This is wrong line and he will be punished. Hassan Nawaz is too good a player to miss out on those. Boundary to close out over number 1, 9 for none, Newpur Lions. Young Amir Khan to take up the attack from the other end. And it's once again going to be Imam facing. Sometimes I think this fine leg up in the circle straight away is not the greatest of options. It just gives nothing to the bowler. And sometimes they can overcompensate like this because he's a natural in-swinger to the left-hander. And Amir, making sure that he doesn't bowl on the pads, has bowled one very wide one. Yeah, you make an excellent point. You want to have a protection on deep square leg that is for a straighter line, but then you don't want to give that protection for fine leg. Amir's start has been sloppy. Three deliveries in a row from Allied Bank Stallions that were off target. Starting off with the boundary last over. And then two more from Amir. He's exactly trying to do that. Trying not to get too straight. To get clipped off and have that onside boundary exposed. Hey, then gone. This was a terrific catch from Haris. Once again, it was wide. It was there for the taking. But Imam just got an edge, and Haris has done the rest. Well, something that the great man has always done, who was on screen, Waqar Bhai, pitching up, letting the ball swing, and that is exactly what Amir Khan did to Imam. This ball, the length was important. Just have a look at this. Once we check the front foot, which is pretty much good, just have a look at this. The driving length, it was there to drive, but Imam, not trying to time it, trying to hit it hard, has edged one. And he'll have to make a leave that is early. 4 he got, and it's 11 for 1.
It's a huge opportunity for young Shahzeb. There's huge responsibility, but also it provides them with a perfect opportunity to shine on the big stage. Early days at this level, but mighty talented. And he's a very, very composed and calm character for his young age. And he's coming off great form in the Under-19 Asia Cup 200s. A big 100 against India. As we see this drive again, Imam was on the move. His feet were not exactly planted and was a bit late on the stroke. And Amir Khan, after bowling 2 wides, has the last laugh. Still the same set of fielders. Fine leg up in the circle. Nicely crunched. Hand from the fielder at backward point, but Shahzeb is off the mark. It'll be interesting to see how Shahzeb operates. Amir is quite slippery. He's skiddy. He's not very tall, but very strong. And so is Obad. Generally, when we saw him in the Asia Cup, Shahzeb seemed to have a bit of an extra time pacing the quick. And here, we'll see at this level, it's his first examination against pace. Well, he's looked decent whenever he's faced bowlers. Not much, but he's looked good. On this platform, wonderfully bowled. Great line, great length, touch of movement. Hassan Nawaz, well, what he did was what any batter would have done. But this extraordinary delivery, this. Lucky that the edge wasn't there. That had everything but the edge. Look at how it seamed away. You feel that Hassan didn't do a lot wrong. Good thing is he didn't go after the ball. Just played the line and it missed the outside edge. This time it's swing. So seam and swing. This is very good stuff after the couple of wides from Amir. Natural outswing to the right-hander. And now he's just caught up with his line and length. And he's getting the swing as well. And Hassan Nawaz doing the right thing, having a good look before he makes a move. Once again running hard. That fielder at cover was in but couldn't prevent the single. This is something the bowlers wouldn't like because he was looking to build a plan against the right-hander. Taimur couldn't prevent the single. And that is interesting now. He's getting his helmet on. Have a look at Taimur. Just a yard too slow. Yeah, there's a short leg for the young batter. Just trying to create some doubts in his mind. As this one is flicked confidently off the pads. And it gets closer to the boundary as the fielder gives it a try. But the ball would win. So good confident start for Shahzeb. He gets a boundary to end the second over. And the Newpur Lions move to 17 for 1. Oh, this is huge. It's big and out of the park. What a great hit. And this is a sight which you can associate with Hassan Nawaz. He can hit big and he can hit the short ball. And we had both in this stroke. Wow, it sounded so sweet.
crack of leather on Willow, and it went Maaz. He's tall, he's elegant, and even when he's hitting ferocious strokes, he does carry that grace and poise about himself. Look at how easy it looked, and it bounced 20 yards back into the terraces. And what sort of a bowling is this? This is just short of length. This is not even a bouncer. So if you want to challenge Hassan Nawaz, who is good at short balls, at least you have to bowl above neck high. And that is where any batter can have a problem. Not on this length. Hassan is too good for this length. We've lost the ball. One of the biggest hits. I do recall a big six here from the days gone by. Salman, do you recall any big hits in Rawalpindi? This is quite massive. It bounced halfway into the terraces and bounced off the railing out of the park. Yes, it went to the stairs and a few rows back. We saw in this very game, Ubaid Shah hit Musa Khan, was a huge hit. Went behind the dugouts, up where the seats are. So we don't have anything to measure, but both of those hits were big ones, monsters. Talking about huge sixes, this one is from the media center end. I recall one from the pavilion end. I'll come back to it. Hassan Nawaz is a sort of player who will go after his shots no matter what. So the best idea for the bowlers is to bowl proper line and length. And do not give something that he can cash on. And short length is certainly one of his favorites, as we see Amir Yamin sitting with Mr. Majid, the fielding coach, the former fielding coach of the Pakistan team, and now with the Newpur Lions, and my school coach in my early days, my first coach. Yeah, I remember he was trying to test your arm this morning. You were good, Salman. Nice and flat. Yep, just took me back 2 decades in school. His arm is still very strong. I was very impressed with that throw. This arm is Urdu wala arm. Means nothing special, as we see this dugout and more experience. The legend Waqar Bhai is sitting there and sitting with the captain, who has made an early exit today. Wonderfully driven, but straight to the man at covers. Yeah. Talking about big sixes at Pindi Stadium. No, you may remember there was a player called Ejaz Mahmood, played for Wabda. He scored 177 in one of the List A games here. And he struck one right in that direction, which bounced off of the last stand and then bounced out. That was one of the huge sixes. Saeed Ajmal played in that game. Imran Nazir played in that game. Shahid Aslam played in that game for Wabda. That sounds like one mighty hit as we get to the end of the third over. Just a ball to go. Newpur Lions 24 for 1. They love to make sure that they develop partnerships. They do not lose wickets in clusters. And Shahzeb has looked good, although he's just played 2 deliveries. And this is that big one again. This monster went into the stairs, a lot of rows back, and then it kept going after bouncing and eventually out of the park. Now Bad has Shahzeb in his sights. Wide. Shahzeb got tempted, but away from his body. A dot to finish off over number 3. Action-packed start to the innings. Newpur Lions 24 for 1.
Well, Amir was able to seam the ball and swing the ball. But now that Hassan Nawaz has got one out of the middle, it'll be a different challenge for him. Once again, turned him around. More evidence of swing. He was looking to play it on to the onside, leading edge. It is about how you present the seam, how good the seam comes out of the hand, and what is the position of the wrist at the time when you release the ball. So Amir, when he gets it going, it's wonderful to see how his seam comes out of the hand, and that is why he gets this movement. We'll try and have a closer look as this one is played to point. Another dot ball. Just if you can show how he releases the ball with the seam up position that moves away. We've seen over the years, we've seen a lot of Amir, and at times he loses that wrist. But when he gets it right, his release is very good. It's just that consistency. That's why he hasn't made the grade. Like I said, he's quick, he's skiddy. More changes in the field, offside field strengthened. Keep an eye on that wrist and that release of Amir. This is shot and cracked away. This is belligerent from Hassan Nawaz. Once again, feeding to his strength. Just keep bowling line and length. You're creating enough problems, but if you bowl like this, he's not in a mood. Hassan Nawaz in this tournament, he's been severe on the short stuff. Short and wide is asking for trouble. Just freeing the arms on this occasion and making sure that he takes advantage of the loose stuff. Long levers. And that is too hot, even for Haris. He had absolutely no chance. 5 more to the total. Typical fast bowler's response, but way too high. Shoaib Malik is clearly not happy. He's put off with this delivery, and it seemed as if he's asking, who asked you to bowl this? That is what the expressions suggest, and there was no need for this. Even if it was a decent bouncer, Hassan is good at this short balls, and he's in form. Bowled perfect line and length, and there were dot balls against Hassan Nawaz. This is not clean, but mid-off is inside the ring, and it will be a boundary. Hassan Nawaz now chancing his arm. This one was in the arc. The result, he will take it. It's proving to be another expensive over from Amir. Yes, the last 3 deliveries just ruining his current spell of wide, 5 wides. Boundary of the wide ball and the 2 big shots from Hassan Nawaz. And once again, ball short, but this time not enough room. And another dot ball. 13 runs so far in this over, and all those runs that came were not good deliveries. Mrs. Shahrukh Babar, Director Sales, Barrier Garden City, sitting in the center in the attendance today. Just a single to close out this first phase of the inning, an action-packed one, 4 done. Newpur Lions 38 for 1.
38 रन्स, एक विकेट गवा के। और ज़रूरी बात यह है कि हसन नवाज अभी तक मौजूद हैं, 22 रन्स, और अभी उन्होंने अपना बल्ला खोलना शुरू किया है। इस तरीके से उन्होंने आखिरी ओवर खेला है और अब उनको रोकना मुश्किल हो गया। ये अपर कट किया 4 रन्स के लिए। क्या कमाल बैटिंग, ज़बरदस्त पावर हिटिंग का इस्तेमाल हसन नवाज की जानिब से। तारिक भाई भी खुश हैं आज इनकी बैटिंग देख के। जहां यहाँ पर पूरी तरह कंट्रोल में नजर आए और गेंद को जहां डिस्पैच करना चाहते थे वही कर दिखाया। खासी कन्विक्शन है इनके स्ट्रोक्स में। विकेट के दोनों जानिब उबैद शाह के साथ एक इनका मुकाबला सा हो गया था मुकाबले के अंदर, लेकिन हसन नवाज उसे जीत रहे हैं बआसानी। दूसरे रन के लिए आना चाहते हैं लेकिन मौका नहीं मिल सकेगा और अब मिस फील्डिंग ने वो मौका फराहम किया। कोई गुंजाइश नहीं है, जितने फिट क्रिकेटर हैं, माज सदाकत थे, गेंद उनके हाथ पहली कोशिश में नहीं लगी। बहुत अच्छा दौड़ते हैं विकेटों के दरमियान। हसन और शाहजेब दोनों फिट हैं। सारी गेम ही फिटनेस की है और जज करने की कि रन अवेलेबल। ऑल्दो उबैद शाह ने पूरी कोशिश की थी बीच में आने की, लेकिन उनके साथी ने मिस फील्ड करके आसानी से दूसरा रन बनवा दिया। अभी भी टेंशन होगी, अभी भी मैच सिक्योर नहीं है। काफी रन्स भी पड़े हैं, 125 रन्स, लेकिन हसन को खड़े रहना होगा। उबैद शाह इस फॉर्मेट में नए हैं, वो गेंद को सीम करने के लिए जाने जाते हैं। इस पिच से मदद मिलती है अगर आप अच्छी जगह से आते हैं। यहाँ पर 8 और 7 मीटर की जो रिवायती एक लेंथ है, वहाँ से हमेशा सीमर्स को ज़्यादा मदद मिलती रावलपिंडी में। यहाँ पर रन्स बन जाएंगे, ये 4 शुमार होने चाहिए। पैड्स की तरफ आए थे उबैद और हसन के पास ये सलाहियत है कि वो विकेट के दोनों जानिब यकसा महारत से खेलें। जहाँ खराब गेंद थी जिसका भरपूर फायदा उठाया है हसन ने, और जैसी फॉर्म और रिदम में हसन है, ये नहीं छोड़ेंगे इस बॉल को। बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी एक ऐसे बैटर को बॉल करना कि जो फॉर्म में भी हो, जिसकी इंटेंट भी हो और टैलेंट और स्किल भी हो, तो मुश्किलात हो जाती हैं बॉलर के लिए। यहाँ खास तौर पर जब सिर्फ 2 ही फील्डर्स बाहर हों दायरे के, और मुश्किल हो जाता है। यहाँ दोनों तरफ जो बैट्समैन खेलने की सलाहियत रखते हैं उनको बॉलिंग करना हमेशा से ही मुश्किल रहा है। फास्ट बॉलर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए। बैरियर टाउन टाइटल स्पॉन्सर इस चैंपियनशिप के, और अब बैरियर टाउन जो है इनके आलमी मंसूबाजात शुरू हो रहे हैं दुबई से। अच्छा सिंगल पिंच किया मोहम्मद अली, फास्ट बॉलर हैं, जानते थे कि झुकने में दिक्कत होगी, इसलिए आप पहुंचे अपनी क्रीज में। हुसैन 5 ओवर्स के बाद 49 पर 1। चैंपियंस कप T20 रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक मेला सा सजा हुआ है, एक अच्छा इनिशिएटिव जहां पे बेस्ट अगेंस्ट बेस्ट खेल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, और मेंटोर्ड भी बेस्ट से हो रहे हैं। तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी
इन यंग क्रिकेटर्स के लिए हो नहीं सकती है, जैसे कि हसन नवाज हैं या शाहजेब खान हैं। लेकिन तारिक भाई ज़रूरी है कि इस अपॉर्चुनिटी से ये फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अगर इस चीज़ से ये फ़ायदा नहीं उठाएंगे यंग क्रिकेटर्स तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। और ये इंडिविजुअल्स के अपने ऊपर है कि किस तरीके से इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं, अपने क्रिकेट में बेहतरी लेके आते हैं, निखार लेके आते हैं। स्टेज सेट है, अपॉर्चुनिटी मौजूद है, अपने आप को दिखाइए, मनवाइए इस लेवल पे। जहाँ क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने बड़े पैमाने पर इससे पहले इतने बड़े बड़े जो नाम हैं ये कभी वाबस्ता नहीं हुए पाकिस्तान क्रिकेट में। गेंद लगी बल्ले पर नीचे जाकर रन हासिल कर लिया गया। शाहजेब जो हैं दरअसल इन्होंने भागने में मजबूर किया, गेंद की तरफ देख रहे थे। हसन जी अभी नए नए हैं शाहजेब इस लेवल पे, हसन के साथ ज़्यादा बैटिंग की भी नहीं है, थोड़ा वक्त मिलेगा आपस में आमांग होने में। और ये मुकाबला भी अच्छा है मोहम्मद अली का इन दोनों के साथ। और मेंटोर्स का आपने जिक्र किया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस। अपॉर्चुनिटी इससे बड़ी नहीं हो सकती है किसी भी यंग फास्ट बॉलर के लिए कि वकार भाई से सीखे। और एक मेंटोर तो मैदान में खुद मौजूद हैं, शोएब मालिक, तो जो मैदान के अंदर आप रह के सीख सकते हैं उसका भी अलग लेवल है। मिसबाउल हक हैं, सरफराज अहमद, सारे चैंपियन क्रिकेटर से लेग साइड में मोड़ के एक रन बनाया शाहजेब ने। शाहजेब जो हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो अगला पाँव है ये हटाया जाए गेंद की लाइन से और उसके बाद उसे लेग साइड की तरफ खेलने की कोशिश की जाए। यही इनका अंदाज रहा है जब से मैं इनको देख रहा हूँ अंडर 19 एशिया कप में भी। और ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी है, काफ़ी रन्स करते हैं इस स्टाइल से, क्योंकि जब आप फ्रंट लेग क्लियर करते हैं तो आपका एरिया बढ़ जाता है। पॉइंट से लेके मिड विकेट स्क्वायर लेग तक आपका एरिया बढ़ जाता है शॉट मेकिंग के लिए। डिफ्लेक्शन पर एक रन यहाँ पर पाएंगे हसन। 150 से स्ट्राइक रेट है शाहजेब का। हसन उनके हमरा हैं, उनका स्ट्राइक रेट 140 है। इस टूर्नामेंट में भी इनका स्ट्राइक रेट 140 रहा है हसन का, लेकिन ये इसको और भी आगे ले जाने की सलाहियत रखते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो खतरा मोल नहीं लेते, खासा वक्त है इनके पास तेज बॉलिंग खेलने का, और ये बहुत कम क्रिकेटर्स में ये खासियत पाई जाती है। और किनारा लगा और गेंद गई महफूज हाथों में विकेट कीपर हारिस के। उनका ये दूसरा कैच और दूसरी विकेट यहां पर स्टैलियंस के लिए। दानिस्ता गेंद को दूर किया अली ने और उसी पर कामयाबी। ये कड़ा इम्तिहान होना था इस यंग बैटर का, मोहम्मद अली को फेस करना। और जहां इस टेक्निक के फायदे हैं वहां कुछ नुकसानात भी हैं। देखिए दूर बॉल किया, समझदार बॉलिंग की है, बैटर के मुताबिक बॉल की। देखिए बाहर दूर बॉल की, इनको पता था कि इनको रीच आउट करना पड़ेगा इस बॉल के लिए। थोड़ा पेस में भी कमी की। अभी लर्निंग फेज है, सीखना होगा और जल्द सीखना होगा शाहजेब को। यहाँ पे वापस गए 6 रन बनाकर 52 पर 2। मोहम्मद ताहा नए आने वाले बाएं हाथ से खेलने वाले बैटर हैं। 105 का स्ट्राइक रेट, 20 की एवरेज के साथ 166 रन। और यही इम्तिहान है तारिक भाई मोहम्मद अली को खेलना, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बेहतरीन बॉलिंग की है। और जैसे जैसे पिचेस चेंज हुई हैं इनकी बॉलिंग स्टाइल भी चेंज होता रहा है। शुरू में ज़्यादा वेरिएशंस करते थे और अब एहसास हो गया कि यहाँ पे लेंथ ज़्यादा ज़रूरी है इस पिच के ऊपर।
सुबह सलमान बाट और शाह फैसल भी यही बात कर रहे थे कि पिच अब थोड़ा स्लो डाउन हो गई है, बहुत क्रिकेट हो गई है। मूसा ने भी इंटरव्यू में यही कहा कि अब ग्रिप हो रहा है बॉल, इसलिए थोड़ा दूर करना होगा, लेंथ बॉलिंग ज़्यादा करनी होगी विकेट हासिल करने के लिए, और मोहम्मद अली ने ऐसा ही किया है। पावर प्ले की आखिरी गेंद आने को है, एक स्लिप ताहा के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर ही खिलाने की कोशिश थी, और बेहतरीन ओवर मोहम्मद अली ने बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, और उसी से जाल में लाए शाहजेब को अपने 52 पे 2। या पावर प्ले की अगर बात करें, अच्छा आगाज किया था लेकिन जल्द ही अपनी विकेट गंवा दी थी। इमामुल हक ने वाइड बॉल को खेलने चले गए, शाहजेब ने साथ दिया हसन नवाज का, जो कि मैन इन फॉर्म और मैन इन कंट्रोल हैं। कमाल की स्ट्रोक मेकिंग, ग्राउंड के चारों जानिब स्ट्रोक्स खेलते हुए थोड़ी मदद भी मिली एक्स्ट्रा रन से। घबराते नहीं है, दलेर बैटिंग करते हैं, तगड़े हैं, इसलिए इतनी आसानी से ये शॉट्स खेलते हैं, बड़ी शॉट्स खेलने में महारत भी रखते हैं। शाहजेब आखिरी आउट होने वाले प्लेयर, मोहम्मद अली जो मैन इन फॉर्म है ABL स्टैलियंस के लिए, उन्होंने ये विकेट हासिल की है। फील्ड खुलने के बाद शुएब मलिक ने बॉलिंग की जिम्मेदारी अपने सर ली है, क्योंकि लेफ्ट हैंडर मौजूद हैं और उन्हीं को शिकार करने की गरज से दरअसल पहुंचे। लेकिन मोहम्मद अली जो है वो जिस तरह अपने दाम में लेकर आए यहाँ पर शाहजेब को, वो काबिल दीद था, क्योंकि हम उससे पहले जिक्र कर रहे थे कि शाहजेब का जो दायां पांव है वो ज़्यादा खुल जाता है लेग साइड की तरफ, और इसलिए उन्होंने गेंद उनसे दूर की ताकि वो अपनी बॉडी से और दूर खेलने पे मजबूर हूं। ये बेहतरीन सोच थी मोहम्मद अली की जानिब से। यही तजर्बा है तारिक भाई, क्योंकि जब आप लॉन्गर फॉर्मेट से शॉर्टर फॉर्मेट में आते हैं तो आपको बॉलिंग करनी तो आ जाती है, आपको बैटर को सेटअप करना आ जाता है। देखिए एंड तक उसका फुटवर्क देखा, जब उनको अंदाजा हो गया कि फिर अगला पांव क्लियर कर रहे हैं तो दूर फेंका बॉल को, और वो चेज करने गए और अपने विकेट गंवाए। ये जो खुशी है, इनको मालूम है कि इनका जो प्लान है वो काम कर गया है, तो बहुत ही समझदार बॉलिंग यहाँ पे मोहम्मद अली की जानिब से। जहाँ अली, ये जो इनका अंदाज साहब वो स्पिनर्स के सामने खासा कारगर रहा है, लेकिन जो अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं वो बड़ी जल्दी भांप लेते हैं। आप अगर उनको 1 इंच देंगे तो वो मील बनाने में वक्त नहीं लेते। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और ये अब देखिए, हम अभी चैंपियंस कप T20 की बात कर रहे थे, यही ब्यूटी है कि 2 यंग बैटर्स हैं, ताहा और हसन, जिनको 2 बहुत ही तजुर्बेकार बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं मिडिल में, एक तरफ से मोहम्मद अली और अब दूसरी तरफ से शोएब मलिक। और जो कुछ इस इनिंग से अगर ये सीख के जाएंगे वो कमाल हो करेगा इनके लिए, अगर वो सीख सकें, यहाँ पे इनिंग को बिल्ड कर सकें, दिखाएं शोएब मलिक के सामने भी कि कैसे खेला जाता है, लेफ्ट हैंडर बैटर है। तो यही ब्यूटी है इस टूर्नामेंट की, यहाँ से ही सीख के जाके ये बेहतर प्लेयर बन सकेंगे। अच्छा स्वीप शॉट खेला, एक ही रन यहाँ पर बनेगा। फील्डिंग में एक नई एनर्जी आ गई है। विकेट गिरने के बाद यासिर खान थे जो आज 12वें खिलाड़ी हैं, शामिल हुसैन को इनकी जगह पर टीम में शामिल किया गया। अच्छी क्रिकेट है, इंपॉर्टेंट पैसेज है ये हसन नवाज के लिए। जरूरी है ये कि इस अगले 2 से 3 ओवर में ये थोड़ा समझदारी से बैटिंग करें और लंबा जाएं, अपनी इनिंग को लंबी लेके जाएं। 7 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, 55 पर 2।
हसन जम चुके हैं, 28 गेंदें उनने खेल ली हैं, उनके साथ नौजवान ताहा हैं। और अब जो है वो इम्तहान में जो सबसे मुश्किल एक पर्चा आता है, अब वो आया चाहता है उसका वक्त। उस्मान तारिक हर टीम की ही इन्होंने बड़ी सख्त आजमाइश की है, और इनका जो इकॉनमी रेट इस टूर्नामेंट में है, ये इनका करियर इकॉनमी रेट है 6.48 का, वो 6 से भी कम है यहाँ रावलपिंडी में। तो इससे ये गवाही मिलती है कि ये अभी तक समझ से बाला तर रहे हैं। ज़्यादातर जो बैट्समैन हैं वो इनको ऑफ द विकेट ही खेल रहे हैं, जिस तरह ये हसन ने खेला था। जी, और हाईएस्ट विकेट टेकर्स में भी इन दोनों का शुमार होता है, मोहम्मद अली का भी और उस्मान तारिक का भी। इसीलिए अलाइड बैंक स्टालियंस जो हैं, ये इतनी तगड़ी टीम है, टॉप ऑफ द टेबल है। 11 विकेट हासिल किए मोहम्मद अली ने, 9 विकेट हासिल किए उस्मान तारिक ने। अच्छा लगा देखे कि शायद अजीज़ और मूसा खान भी, जो कि नूरपुर लायंस के 2 बॉलर हैं, इसी लिस्ट में मौजूद हैं। इसलिए तगड़ा मैच है ये, एंड तक जाने वाला मैच है ये। 113 रन 77 बॉलों पर अभी भी करने हैं। हसन नवाज की है यहाँ पे नूरपुर लायंस के लिए। नहीं रोक सके हारिस, हालांकि उन्हें बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि गेंद जो है आपको खुद ही रोकना होगा। मुतहर्रिक रखते हैं अपने खिलाड़ियों को मोहम्मद हारिस विकेटों के पीछे। हम वक्त ये खेल में रहते हैं, रखना चाहते हैं दूसरों को भी। फुल शॉट, ये ज्यादा दूर नहीं थी शुएब मलिक से। जब भी ये हसन नवाज हिट मारते हैं तो बहुत तगड़ी हिट मारते हैं, बहुत जोरदार हिट मारते हैं। ऑल्दो शुएब मलिक बहुत ही बेहतरीन फील्डर हैं, लेकिन जितनी जोरदार ये शॉट थी, पटाखा जिसे बोलते हैं, कि उनको भी बीट करती हुई बॉल गई। अपना हाथ पकड़ के बैठे मल रहे हैं, ऐसा एहसास है उनको कि कितनी जोरदार गई हिट था ये। चिप किया है, अच्छा शॉट है, लेकिन फील्डर मौजूद है, एक ही रन बनेगा। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी इन दोनों को, ताहा और हसन नवाज को। थोड़ा लंबा लेके जाना होगा इस इनिंग को। लेकिन अली, आप नहीं समझते जो हसन है ये जो है ये अपने अंदाज से खेलते चले जाएं यहाँ से, और फिर से पुल करने के लिए गए। गेंद एक टिपे पर पहुंची लॉन्ग ऑन की जानिब, क्योंकि इनको जो अपना फितरी अंदाज है उस पर समझौता नहीं करना चाहिए। इनके पास जितनी सलाहियत भी है। देखिए जी, बिल्कुल एक तरीका है सोचने का, ठहर भी जाते हैं क्योंकि दोनों क्वालिटी बॉलर्स दोनों तरफ से बॉलिंग कर रहे हैं। अपील की है यहाँ पे, फैसल आफरीदी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर यहाँ पे अगर हसन जब तक खड़े रहेंगे तो रन्स तो आते रहेंगे, इसलिए अगर लंबा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी बात छोड़ देते हैं मरीना और शाह फैसल पे करने के लिए। 9 ओवर्स के बाद 61 पर 2। Two down on 61 for Newpur Lions. The danger man is still there out in the middle. 40 of just 31, Hassan Nawaz. He's the only, not probably only, but a big wall to conquer for Allied Bank Stallions. Shoaib Malik will continue. At the end of the power play, the equation was pretty even, Steven. Allied Bank Stallion got 51, Nurpur Lions got 53. But last couple of overs hasn't yielded much.
Taha has been given another opportunity. Gone on to 5 now of 8. Hassan Nawaz doesn't need to be starved of strike. And this is the danger time in Hassan's innings as well. He's been getting this far in this tournament with only once propelling to 50 and then getting out immediately after that. But today his role is very, very important. And I'm surprised that while Bank Stallions haven't done their homework on Hassan Nawaz, he got out so far in this tournament 5 times. 1 was run out, 1 was dismissed by a fast bowler. The 3 of the dismissals came off from spinner. And we all know that what sort of form he is in. Down the track. And it's a boundary. Perfect use of the feet, finding the gap, and runs are flowing for him. Although Shoaib Malik saw him coming and threw the ball wider, but Hassan has got long levers. He was able to get the access to the ball and then give it a fair thump. Look at that, how far he had to reach out. But still, and you can hear Haris from behind the stumps. He's not perturbed. He thought it was a good ball. Good running, pushing hard for the second one, and they'll pick it up. No problems whatsoever for Hassan out in the middle. So yeah, coming back to my point, he's been dismissed thrice by a spinner, and you don't want to give him a start. Not sure why Allied Bank Stallions did not try any spinner within the power play just to unsettle him, not allow him to score that freely that he does off the pace bowlers. Usman, Tariq, Shoaib Malik, even Maaz, they have the ability to bowl within the power play, even just for 1 over. But they just gave away an easy platform to him. Yeah, between Haris and Shoaib Malik, they left it till the end of the power play to introduce spin. But definitely you make a case in point inside the power play, because playing spin when you're 40 not out is different to when you're starting out and you're finding your feet. And that opportunity went a-begging. That gripped and turned. Taha had no clue. Hands on head, Shoaib Malik thinking what might have been. 9 gone. Newpur Lions 69 for 2. टीम इधर आओ आप पॉइंट आओ बैक पीछे आप इधर जल्दी 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 गाड़ा कवर है Wicket for Amir and Muhammad Ali. Very impressive Muhammad Ali. Usman Tariq has bowled 1 over. His spell will be very crucial, and also how Haris will handle him. The required run rate has gone up above 9. But the batters who've been able to wait long enough have had some success against Usman Tariq. Yeah, and a good example is Haider Ali. Delayed his shots, did not when chasing that length and any room given by Usman. It'll be interesting to see how Hassan adjusts. 1-1 मेरे पास. Gets it through the infield. Mehran Mumtaz is on the field. We'll find out who is he replacing. Hussain Talat is off the field for now. Mehran joining the field in the middle. Required is 9.28, currently 7.50. That's not a concern as long as Hassan is out in the middle for Newpur Lions. Got Hushtal to follow as well. He's been in a good touch. Sharoon Siraj. They have strengthened their batting lineup, Newpur Lions. Catch.
Taha took a chance, got away with it over the head of the mid-wicket fielder. Just a single. Sluggish running. Shamyl Hussein and Amir Khan were the fielders. Just nearly. He tried his best to jump and put some hand to it, but couldn't really do so. He pauses for an eternity and then bowls that dusra that leaves the right-hander. Got good bounce on that occasion. It's a case of who blinks first with Usman Tariq, because his approach and then his delivery, it has a huge pause in between. This one is short, nicely picked, beautifully split the gap. Hassan Nawaz gets to his 50. What a wonderful knock this has been from this tall opener. He's really felt in good form throughout the tournament. Second half century for him. Yeah, he's in a sublime form. Some magnificent shots he's put on display for us to witness. Yet another 50 of 39 deliveries. He's enjoying his season so far. Wrong line. Did it get something on it? No. Wide given. Untidy from Harris. Yeah, quick to pounce on it. Quickly off on the back foot. Picked up the length and dissected the two fielders in the boundary. That's beautifully played. Now you can see his feet skipping inside his crease back and forth, creating that length for himself. We'll come back and have a look at that boundary again. 10 done. Nurpur Lions 77 for 2 and time for drinks. This game is very evenly poised at the halfway stage of the run chase. Hassan Nawaz holds the key, 53 of 40. Taha hanging in there, 6 of 10. The required run rate 9.2 in the remaining 10 overs.
Not daunting by any means for the modern day batters with 8 wickets in hand. Still plenty of cricket left to be played. Hassan Nawaz started, looked apart like always. Anything fractionally short, he managed to put it away into the leg side as well as towards the off. Up and over. He always has looked in control. This one slightly getting an inside edge, but also attacking the spinners. Good positive footwork against Usman Tariq, which is not easy, but in the kind of form he is, he's expertly done it. Allied Bank Stallions, well, one each for Amir and Ali. Others still searching to get some wickets and put some momentum back into their own zone. Role of spinners going to be crucial. Muhammad Ali also will have something to say in the remaining 10 overs. He's got the ball in his hand. It's been a gorgeous day. Brilliant winter sunshine all day long. Sun has started to go down and the evening is even prettier. And we've seen a good contest, and I do have a feeling it's going to go right down to the wire. 2 important points at stake for both these teams. Looking for automatic qualification into the final, challenging UMT Markhors for that top position. All in readiness once again as Hassan Nawaz will look to restart again. Play and a miss, that extra bounce, back of a length, typical Muhammad Ali length. Hassan Nawaz was lucky. Yeah, now this phase is going to be very crucial for both the teams, especially Newpur Lions. Hassan just standing there, no footwork on that occasion. Usually he's quite immaculate. But Muhammad Ali, he's the one who can turn the things around pretty quickly. The other day we saw that he managed to get 2 wickets within an over and that turned the game. Muhammad Ali along with Shoaib Malik and Usman Tariq would be a crucial partnership. Nicely struck. Ball is really pinging off the middle of Hassan Nawaz's bat. He only had to beat Mehran. 2 sweepers, but 5 yards either side of Mehran. It could have got him a boundary. Just angle face. He was looking for that gap, but Mehran got in the way. It's important for Taha to just keep on the communication going between Hassan. Just nudge around. Anything in his zone, he can go after it. They're tightening the ring of the offside for Taha. You heard Haris from the background saying only cut shot. That's what he thinks Taha has got. Well, he goes the other way. Looked very ungainly, but will do the right thing. Get Hassan back on strike. Don't waste any deliveries. That is the order of the day for Taha. I think that was very risky in terms of just picking up a single, because even if he had some sort of connection on it, the field is there. They've got deep fine leg, so it would have traveled, giving him just a single run. You need to calculate the risk and reward in the shots you select. Sometimes little mind games, they do induce such strokes. Slower delivery, fuller length. Haris not happy. He wants the throw to come into the square. We all know this old tactic. Umpires keep an eye on it though. This is 28 of 29, this partnership. But Hassan is the key here in terms of Nurpur Lions chasing it down and Allied Bank Stallions, whether they are defending it. Muhammad Ali is one bowler to go to for Haris for sure. Taha charges down, good hand, excellent from Muhammad Ali. Mid-off was up. If that ball had beaten him, could have been runs in there for Taha. Not to be. Excellent work from the tall fast bowler.
Yeah, he's a diligent player, committed 100% to whatever he does, especially when he's bowling. Of his own bowling, he'll put all the efforts. Good over so far. Just one more to go. They would like to close it without conceding a boundary. Now slight change in field. They've got deep mid wicket. Fine coming in. Just trying to protect the boundary. It's been a very good over from Muhammad Ali. Trying to build pressure on Taha. Yorker, it's gone in the air. Fielder is scurrying around and won't be able to get there. Mohsin tried his best, but Taha, too strong. That little bottom hand took the ball over. And that's the one boundary for the over that Newpur Stallions need from here. Umpire wants to have a look. Well, he takes on the challenge, Taha. Muhammad Ali and Haris placed the fielder right at the boundary, that exact area, but he just a shimmy down the track, came in, and with a lot of wrist. Yeah, it did travel all the way. Wanted to just nudge it back to Taimur, but couldn't do so. The boundary they were looking for, they've earned it. 11 overs gone, Newpur Lions 2 down on 86. Oh, edgy. It was a huge deflection. It got Harris's glove, some part of it. Very difficult, those ones standing up. Definite chance there. It wasn't that short to cut. Haris is usually quite clean behind the stumps, but lucky for Hassan, he survived. Could have been a big blow for Newpur Lions. Taha has gone for it. Mehran gets it on the bounce. Taha will come back for the second. Newpur Lions gathering some momentum now. That missed chance of Usman Tariq. Hassan Nawaz was the batter. आराम से डेजी Chance is very difficult standing up. Huge deflection. Have a look at that. He almost knocked the cover off of it. And if you look here, Haris, how little he had from the time the ball hit the bat and when it got to him. That is a smashing blow. That is enormous. Usman is not happy, but Taha is turning it on. That was immaculate footwork from Taha. It's not easy to come down to the track against Usman Tariq, but he was up for it. Even on the previous delivery, he was trying to use the crease, but this time he picked up the length and line beautifully. Look at that. Right close to the pitch of the delivery and through the line. That was one big hit. Well, those 2 sixes by Taha, as this one clearly seems to go over, has really taken the pressure off of Hassan Nawaz. Can really settle himself in and wait and take this chase deep. Good batting, Taha. Game of cat and mouse between Usman and the Lions batters. You can see Taha just hopping on crease, trying to somehow distract Usman Tariq.
But he's a brave lad there. Look at that. That was a brave shot. But covering the line, getting close to the pitch of delivery. And again. But this time the connection isn't that clear. And the fielder will take it. Revenge has been taken by Usman Tariq. Shoaib Malik, he's too good to drop these. And Taha finally has fallen down for the trap. Well, Taha was trying. You can't fault the effort. He's perished in the cause, but in doing so, he maintained the required run rate that was needed. This time probably at the bottom half of the bat and just went more up than in distance. And Shoaib Malik safe as houses. You can bet on him taking this catch any day of the week. Taha gone for 21. Newpur Lions 95 for 3. आज भी आमिर यामीन को पहले भेजा गया है खुशदिल शाह और विकेट कीपर रोहिल नज़ीर से। ताहा जो हैं अच्छी बैटिंग कर रहे थे, वो आउट हुए अभी इस ओवर में उस्मान के हाथों। इससे पहले छक्का लगा चुके थे और फिर से बाउंड्री क्लियर करने के लिए गए, लेकिन लॉन्ग ऑफ से आकर शोएब मलिक ने एक कैच मुकम्मल किया, इनिंग्स को मुकम्मल किया ताहा की। बहुत ही बड़ा दिलचस्प मुकाबला है यहाँ पर। इस वक्त तकरीबन 8 के औसत से 95 रन हैं और 9 से ज़्यादा की औसत दरकार है। दोनों ही टीमें जो हैं बराबर खेल में मौजूद हैं। अली जी हाँ, बहुत ही अच्छा है मैच जारी है, दोनों क्वालिटी साइड्स हैं। अब माज सदाकत आए, 1 विकेट हासिल किए लेकिन अच्छे बॉलर हैं। यहाँ पे भाग के हैं और मुकम्मल भी कर लिया है रन। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो है वो नूरपुर लायंस के लिए कि हसन नवाज डटे रहें, खेलते रहें, क्योंकि वो रहेंगे तो बड़ी हिट कभी भी मार सकते हैं। और जैसे अभी आपने कहा कि एक बार फिर ऊपर भेजा है आमिर यामीन को, वो तजर्बे को यहाँ पे काम में लाना चाहते हैं कि हसन नवाज को खिलाते रहें साथ और बाउंड्री भी हासिल करते रहें। यही रोल होगा यहाँ से आमिर यामीन का, और ये तो है ही है, ये भी अच्छी फॉर्म में है। शरून सिराज भी हैं, वो भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो बैटिंग तो है नूरपुर लायंस के पास। स्टार्ट में और इस बार स्लाइस होकर गई ये बल्ले से सीधी यहाँ पर आमिर खान के हाथों में। तो आमिर यामीन बगैर कुरन बनाए वापस जाएंगे। महज सदाकत ने उनकी विकेट हासिल की। यहाँ पर मुझे लगा था शायद उनका यहाँ पे रोल थोड़ा अलग है, लेकिन वो तो अलग ही मोड में आए, अलग ही मैसेज लेके आए। आते ही पहले ही बॉल पे बड़ा हिट मारने चले गए। ये ख़राब क्रिकेट है। इस शॉट में कोई तजर्बा नहीं था क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेड था इनसे, लेकिन पहले ही बॉल पे वापस जाना होगा। 96 पर 4। आमिर यामीन का तजर्बा नाकाम रहा। खुशदिल शाह आ गए हैं क्योंकि पहले जब माज सदाकत लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे तो जो है खुशदिल शाह ही ज़्यादा बेहतर इंतखाब हो सकते थे कि इनको जल्दी भेजा जाता।
यहीं इस टूर्नामेंट में इन्होंने अपने 3000 रन मुकम्मल किए हैं T20 क्रिकेट में। अच्छी फॉर्म में भी है खुशदिल शाह, एक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थे। पहली गेंद से ही बाहर निकल आया और अच्छी फील्डिंग वहां पर तैमूर गेंद को पाटली रोकने में कामयाब हुए। अच्छा भला जाते जाते एक प्रेशर सा ले लिया है और उसकी वजह एक ये विकेट भी है, क्योंकि आमिर यामीन से बहुत कुछ एक्सपेक्टेड था कि अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करेंगे, हसन नवाज को साथ खिलाएंगे, लेकिन वो तो खुद ही किसी और मूड में है। और अब आते ही खुशदिल ने भी पहले ही बॉल पे इंटेंट दिखाई है कि ये भी तेज खेलने आए हैं। हसन के होते हुए क्या ये सही है, ये सवाल है, क्योंकि वो वेल सेट हैं, उनके पास ज्यादा चांस है बड़ी हिट मारने का। क्यों खुशदिल शाह जो हैं ये मैचअप जो है ये बड़ी हद तक उनके लिए ज़्यादा मायने रखता है, ये माज सदाकत का, तो इसलिए वो वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहते थे। ये बुरा ख्याल नहीं था खुशदिल शाह का। लेकिन पहला बॉल खेल रहे थे तारिक भाई, अगर यहाँ पे विकेट गिर जाती उनकी तो 97 पे अचानक 5 हो जाते और उनके वापस जाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता। तो फ़ायदा इतना था नहीं, नुकसान शायद ज़्यादा था इसमें उनके आउट होने से मेरे मुताबिक। क्योंकि हसन अगर हैं तो आप सिर्फ उनका साथ दीजिए, उन पे प्रेशर मत आने दीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आपकी बहुत ज़्यादा रन रेट रिक्वायर्ड है, सिर्फ 9.73 की रन रेट रिक्वायर्ड है, जो कि मॉडर्न डे में बहुत आसानी से अबूर होती है। इसलिए आपको थोड़ा सा समझदारी से यहाँ पे फैसले लेने होंगे। 43 गेंदों में 71 रन की जरूरत है और यहाँ पर हमलावर हुए और बड़ा शॉट खेला, बहुत बड़ा छक्का ये, और गेंद आई स्टैंड में। खुशदिल शाह ये पहुंचे हैं और इनकी आमद का हो गया ऐलान। आते ही छा गए हैं, 13 ओवर्स तो हो गए थे, लेकिन इस बाउंड्री के साथ जिस मैचअप का आप जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त इस छक्के के साथ वो बात साबित हुई। इनके इरादे, इनका प्लान, मैसेज क्लियर है। 13 के बाद 104 पे 4। मोसी शाबाश शाबाश। ना 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 सेट खड़े हुए हैं हसन नवाज। अच्छा स्पेल उन्होंने किया है और दरमियानी ओवर्स में आकर उन्होंने मुखालिफ टीम का एक बार फिर रास्ता रोका, विकेट भी हासिल की। और यहाँ पर क्या ये दूसरी है, खासे खुश हैं हारिस, क्या वो स्टंप कर चुके, एक बार फिर फ्लाइट में बीट किया था उस्मान ने। दिलचस्प सूरत हाल है और ये बड़ी विकेट होगी अगर यहाँ हसन को जाना पड़ा। जहाँ बहुत बड़ा मोड़ है ये इस मैच में, अगर यहाँ पे आउट हो जाते हैं तो। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के लगता नहीं है कि उनका जो पाँव है वो हिला होगा। स्ट्रॉन्ग बेस है, खड़े हैं अपनी क्रीज के ऊपर। हारिस जरूर खुश थे। फैसल भाई ये देखिएगा, फैसल भाई बेस स्ट्रॉन्ग ही रही है और लाइन से पाँव अंदर ही है। जी हाँ, यहाँ पे इस एंगल से लगता है कि इनका जो पाँव है वो आ गया था। जहाँ वाज़े तौर पर इनका जो पाँव है ये पीछे को हो लिया था, इसलिए ये आउट करार यहाँ पर नहीं दिया जा सकेगा। अलबत्ता जो फैसला है ये जल्दी आ जाना चाहिए था इससे भी।
यह काफ़ी वाजे फ़र्क से अंदर हैं उनका पाँव। हसन का इम्तियाज़ इकबाल है तीसरे अंपायर, उनको ये फैसला लेना है और दुरुस्त फैसला नॉट आउट का। वो हसन, अब इनकी सोच क्या होगी? क्या ये सामने हेड लगाएंगे? लेकिन अभी भी उन्होंने क्रीज का इस्तेमाल करना चाहा और भरपूर कर दिखाया। भी इनके खिलाफ ये शॉट इससे पहले अटेम्प्ट कर चुके थे, इस बार प्लेसमेंट भी थी। या वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट करना है वो काम आ गया, थोड़ा वेट किया, लेंथ को परखा, और जैसे आपने कहा कि प्लेसमेंट भी शानदार रही, कोई फील्डर मौजूद नहीं था वहां पे। एक बार फिर बड़ा हिट खेले, ये बहुत ही बड़ा हिट है, ये जाएगा 6 रन के लिए। तो अब आसानी से डील कर रहे हैं उस्मान तारिक को हसन। 10 रन आ गए 2 बॉलों पे। हसन ने स्पिनर के सामने कुछ वक्त जरूर लिया, लेकिन अब जो है वो पूरी तरह भाम गए हैं कि उस्मान जो है इस पिच पर किस रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं। और फ्लाइटेड डिलीवरी थी और इस पर पिल पड़े, और ये एक और बड़ा छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। कितनी ज्यादा रेंज है, अपने हाथों को वुसअत दी यहां पर हसन नवाज ने। वाह, क्या क्या बात है। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, क्या बात है। शायद ही इससे बेहतरीन बैटिंग टैलेंट हमने इस टूर्नामेंट में देखा हो। कितने आराम से हिट मारते हैं, ऐसे कोई मसला ही नहीं है। अच्छी रेंज दिखाते हैं, बॉल को पिक किया है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी है कि अपनी लिमिट्स का पता है, उस लिमिट्स का फायदा उठाते हैं जब भी उनकी जोन में बॉल होता है। तो शायद पहली बार इस तरीके का ट्रीटमेंट मिला है उस्मान तारिक को इस टूर्नामेंट में कि किसी यंग बैटर ने आड़े हाथों लिया उनको। यहाँ इनका जो कोड है वो मिल गया है बिल आखिर हसन नवाज को। अब उस्मान दबाव में है कि अपने स्पेल को किस तरह ख़त्म किया जाए। इस वक्त ये विकेट का बिल्कुल नहीं सोच रहे होंगे, सिर्फ बच के जाने का सोच रहे होंगे, इसलिए उन्होंने दिफाई लाइन को इख्तियार किया, गेंद को पैड्स की तरफ किया। इस ओवर में 16 रन बने 120 पर 4। शाबाश 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 बॉयज, कम ऑन यार, क्या हो गया? कम ऑन बॉयज, इसके बाद टेलेंडर है, एक आउट हो जाए, शाबाश। अरे फास्ट बॉलर के सामने जब पहले खेल रहे थे स्ट्राइक रेट हसन नवाज का 140 का था, लेकिन जब शुएब मलिक, उस्मान तारिक, माज सदाकत आए तो वो कम होकर 127 हो गया था। अब वो दोबारा 140 से आगे निकल गया है। ये पिछले एक ओवर में जिस तरह दिल खोल के उन्होंने पिटाई की उस्मान की, लेकिन इस वक्त लेफ्ट हैंडर है मलिक के सामने। खुशदिल, ये खतरा मोल लिया है इन्होंने। हसन जिस तरह के मूड में और खुशदिल जो हैं वो भी गेंद को उड़ा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, ये गैम्बल हो सकता है, ये विकेट भी हासिल हो सकती है और इस ओवर में रन्स भी आ सकते हैं। देखा हमने पिछले ओवर में क्या किया है हसन नवाज ने। खुशदिल क्या उनको खुद हिट मारने जाएंगे या सिंगल लेके हसन को देंगे? इरादे तो यही है कि वो खुद ही संभालेंगे सिचुएशन को। क्या कर सकते हैं, क्योंकि 6 विकेट्स हैं, रन रेट रिक्वायर्ड जो है वो 8.65 की है, और एक और अच्छा ओवर क्लियर कर देगा। देखिए थोड़ा स्लो किया, बहुत ही समझदार बॉलर हैं शुएब मलिक, इतनी आसानी से मार खाएंगे नहीं। अच्छा रन लिया बैकफुट पर खेलकर, फील्डर बिल्कुल सामने थे, लेकिन कोई हिचकिचाहट नहीं थी दोनों खिलाड़ियों के जहन में, वो यकीन के साथ भागे थे। ये पिछले ओवर में हसन नवाज ने जिस तरह आड़े हाथों लिया, पहले चौका लगाया, फिर 2 लगातार छक्के लगाए,
ये आज के दिन का बेहतरीन शॉट था। शाबाश शाबाश शाबाश। अराउंड द विकेट शोएब मलिक इस गेंद पर डेफ्ट टच करने की कोशिश की, लेकिन उतनी ज्यादा रफ्तार नहीं मिली। बहुत समझदारी से खेल रहे हैं। अरसलान नवाज भी जानते हैं कि शोएब मलिक को लाया गया है चांस लेने के लिए, उनकी विकेट हासिल करने के लिए। राउंड द विकेट बॉल कर रहे हैं, मिड विकेट और स्क्वायर को थोड़ा बाहर रखा हुआ है, मिस हिट हो तो उनके हाथ में जाए। देखना होगा कि इस ओवर को कैसे गुजारते हैं। क्या रिवर्स स्वीप के मुतालिक सोचेंगे? और यहाँ पर स्टंप हो गए, दूर दूर गेंद की शोएब मलिक ने, और उसका नतीजा ये विकेट हुई और अपने दाम में ले लिया तजुर्बेकार मलिक ने हसन को। तो इस तरह उनका खुद बॉलिंग करना ये टीम के हक में सही साबित हुआ। यही खतरा था शोएब मलिक की समझदारी, ज्यादा टर्न करते नहीं हैं। ये बॉल तेज की आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, थोड़ा जल्दी निकल आए थे, इसलिए उनको वक्त मिल गया बाहर बॉल करने का और थोड़ा तेज करने का। लेकिन कमाल की इनिंग खेले इस यंगस्टर ने, 74 रन की। काश ये फिनिश कर पाते, लेकिन काम अपना काफी हद तक कर गए हैं। 121 पे 5। भाई सज्जा सेम पिच, स्वीप को थोड़ा अंदर कर रहा हूँ। शाबाश शाबाश शाबाश। स्टार्ट में 2-9 रोहित नजीर जल्दी नए आने वाले बैटर हैं, अभी भी 48 रन बनाने हैं 31 बॉलों पे। आसान अभी भी नहीं है, इसको आसान मैच नहीं समझना चाहिए नूरपुर लायंस को। ओ ये भी हवा में था बॉल। ये तजर्बा है शोएब मलिक का, ऐसे ही नहीं आया। 15 ओवर गए, 122 पे 5। देखिए दोनों जो लकीरें हैं वो फिर से आ मिली हैं, ज्यादातर आसपास रही हैं इस मुकाबले में। और ये आखिर में जो 5 विकेटें गिरी थी ये पहली इनिंग्स में स्टैलियंस की, उसका फ़ायदा हो सकता है अब यहाँ लायंस के सामने, क्योंकि हदफ है, इन्हें हदफ को देखकर खेलना है। वो शायद 168 से कहीं आगे का सोच रहे थे जिस वक्त बैटिंग कर रहे थे। या सिर्फ जो मसला है वो लायंस के लिए वो तजर्बा है मोहम्मद अली का, जिनको आखिरी 2 ओवर्स इन 5 ओवर्स में करने हैं। उबैद शाह ने 1 ओवर करना है, आमिर के भी 2 ओवर हैं, शोएब मलिक का भी 1 ओवर है। अब देखना होगा कि ये इस बॉलिंग से कैसे डील करते हैं। खुशदिल शाह जिस तरह की फॉर्म है उनका तो हमें अंदाजा है कि वो कैसे बैटिंग करेंगी, क्या उनकी अप्रोच होगी, लेकिन उनको साथ भी चाहिए होगा दूसरे एंड से। ये पिछले मैच में डेथ ओवर्स में आकर उबैद ने अच्छा टेम्परामेंट दिखाया था, उबैद शाह ने। अभी जो इनके 5वें बॉलर के ओवर्स हैं शोएब मलिक और माज सदाकत जो मिलकर किया करते हैं, वो कोटा जो है हो चुका है पूरा। असल जो दर्द-ए-सर हो सकती है यहाँ पे फैसला होगा वो आमिर खान के 2 ओवर्स होंगे, क्योंकि डेथ ओवर्स में उनका उतना तजुर्बा नहीं है। यही सोच रहे होंगे इमाम और वकार यूनुस भी। अराउंड द विकेट आएंगे लेफ्ट हैंडर खुशदिल को अली। देखिए अगर थोड़ी सी समझदाराना बैटिंग की जाए तो मोहम्मद अली को आप 7-8 रन भी ले लें, ज़्यादा फैंसी नहीं जाएं, उनके पीछे नहीं जाएं, ज़्यादा रन के लिए नहीं जाएं।
और फिर एक आधा ओवर अगर आमिर का और उबैद का ख़राब बॉलिंग वो करें तो उसको लूट सकते हैं जैसे कहते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ मोहम्मद अली को विकेट दे देंगे, चांस लेंगे, उनके अंदर वो सलाहियत है विकेट हासिल करने की, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो देखना होगा कि इस रन चेस को बाकी आखिरी 4 ओवर में कैसे पेस करते हैं, किस समझदारी से बैटिंग की जाती है, क्योंकि 45 रन 28 बॉलों पे तारिक भाई मॉडर्न डे क्रिकेट में 6-5 विकेट्स हों, ज़्यादा मसला होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। रोहेल नज़ीर ने कोई ख़तरा मोल नहीं लिया। मोहम्मद अली जो हैं ये क्या गेंद को अब इस वक्त आकर रिवर्स कर सकते हैं। 1-2 मैचेस में हमने देखा था ये गेंद जो है वो टेल इन हुई थी ज़्यादा दोपहर को। इनमें ये सलाहियत है, रिवर्स स्विंग क्या करते हैं ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। लेकिन स्टैलियंस की टीम को मैचेस जीतना आते हैं, स्कोर का दिफा करना भी आता है और स्कोर को पार करना भी। चेक किया अपने शॉट को, रन नहीं मिल सकेगा। हर जो डॉट गेंद है ये दबाव का बायस बनेगी और अब 26 गेंदों में 44 की जरूरत है। जी अभी आपने जिक्र किया कि स्टैलियंस को मैच जीतना आते हैं, तो उसकी बहुत बड़ी वजह शोएब मलिक हैं जो कि ग्राउंड के अंदर खुद मौजूद हैं। फील्डिंग हो, डिफेंड कर रहे हो तो फील्ड पोजीशनिंग, बॉलिंग चेंजेस सब में इन्वॉल्व रहते हैं। एक बार हमने देखा रन चेस के अंदर एंड तक खुद खेलते रहे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकती हैं मैचेस में, और शोएब मलिक तो डेफिनेटली स्टैलियंस के लिए वो फ़र्क डाल रहे हैं बाकी टीमों से। बड़ी हिट इतनी आसानी से खाएंगे नहीं, और खुश नहीं थे फील्डर की एफर्ट से, शायद वो चाह रहे थे कि ये रन रोका जाए, क्योंकि वेरिएशन से बॉल कर रहे हैं, इनटू द पिच बॉल किया है, स्लोअर वन किया है, इसलिए इतनी आसानी से हिट नहीं खा रहे हैं और कोई रूम नहीं दे रहे हैं खुशदिल शाह को कि अपने बाजू खोल सकें और बड़ी हिट लगा सकें। उस एंगल से बॉल कर रहे हैं जहां बॉडी के अंदर बॉल आ रहा है। बहुत ही समझदार बॉलिंग है ये। शामिल ने डायरेक्ट थ्रो करने की कोशिश की थी, फील्डिंग अच्छी रही है। शाहरुख सिराज जो हैं अभी भी इनको आना है। शाहिद अजीज वो अच्छे हिटर हैं, मूसा खान अच्छे हिटर हैं T20 के, तो इसलिए लायंस के जो सपोर्टर्स हैं उनको दिल बर्दाश्त होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी बैटिंग का तो है, लेकिन मुझे जो खतरा लायंस के लिए है वो है तजर्बा मोहम्मद अली का भी। शोएब मलिक का अगर एक ओवर और आता है तो हमने देखा है कि ये जो की मोमेंट्स में स्टैलियंस अपने होश और हवास को अपने काबू में रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये वाइड इस बार बहुत बाहर थी लेग स्टंप के, 1 रन का और इजाफा। अभी भी ये ओवर खत्म नहीं हुआ। ये ऐसा वक्त होता है कि जो बड़े बड़े तजुर्बेकार खिलाड़ी होते हैं वो भी दबाव में आ जाते हैं। मोहम्मद अली को भी इसका एहसास हुआ होगा। यहाँ आहिस्ता गेंद करना चाहते थे, लेग कटर की कोशिश थी। बहुत दूर भाग के गए थे हारिस मशवरा देने मोहम्मद अली को। क्या मशवरा होगा, क्योंकि फील्ड तो चेंज की गई है उसके बाद। डीप मिड विकेट का फील्डर दायरे के अंदर आ गया है, क्या मशवरा होगा तारिक भाई। इनटू द पिच, लेंथ बॉल। ये इनकी ताकत तो वही रही है, लेकिन यहाँ यॉक करने के लिए गए और अच्छा इसे खोद निकाला। 1 ही रन मिल सकेगा रोहेल को। 16 ओवर्स के बाद सूरत हाल और ज्यादा दिलचस्प, 128 पे 5।
41 needed now of 24 deliveries. Khushdil Shah is still in the middle. Rather precarious situation from here onwards now. The required run is 10.25. Currently, Newpur Lions are running around 8. Still relaxed, as long as Khushdil is out in the middle. They've got plenty to come in as well. Sharoon, Shahid Aziz, but they're up against some experienced bowling. Shoaib Malik now continuing. Managed to get the big wicket of Hassan. Shuffling across, and just for single, wanted to sweep it. That's one of his signature shots. Ruhail. Everything now is on Khushdil, probably. Yeah, all is not well there. In this picture, there is a bit of concern about what will happen. Working out ways. Now we are getting to that stage of the tournament where teams, after every game, have a look at the points table and think about their future progression. As Khushdil, who is a key player, but at the moment he's facing Shoaib Malik, who is so far been exceptional. 14 runs he's given away, 3.1 overs bowled. Pick up the most valuable wicket of Hassan Nawaz, who scored a brilliant 70-odd runs. And there it is, the big wicket, the next one. Just look at that, how much Shoaib Malik is happy about it. Celebration, you can see, and disappointment in the dugout of Nurpur Lions as Khushdil Shah cannot execute his favorite stroke, which is mid-wicket. Newpur Lions needed Khushdil Shah, even more so today, with no one at the end. But Shoaib Malik, when we talk about experience, this is all he brings to the table. It was fuller, and yet Khushdil Shah opted to play that shot. Was nowhere in the position to do so, and delighted he is, and rightly so. Now Allied Bank Stallions probably on top of the game. Probably checking the no ball. Umpires just want to make it sure because it's an important moment in the context of the game. 14 needed, 22. Yeah, probably there is something behind the line. Imtiaz Iqbal. Yeah, he agrees with it. Khushdil Shah back in the hut on 10. Nurpur Lions 6 down on 129. Come on, boys. Shahid Aziz now in the middle with Ruhail. 40 needed, 22 legal deliveries. Well, he has the ability to hit big, strike rate of 144, but this is a difficult situation up against one of the most experienced bowlers. Nudging around. He's quick enough, Shoaib Malik, but couldn't keep them away from the single. Khushdil. Yes, he's trying to hoik it over mid-wicket, but misses altogether. No connection with the ball whatsoever. He could have opted to play straight or maybe over covers, but he's too much restricted. Just looks to go big on the own side. And at the moment, the Allied Bank Stallions have the upper hand in this game. Concerned looks. Captain Imamul Haq, as this one is middled. And this will go and go big. It's a 6. Ruhail Nazir comes into the action. And he surprises Shoaib Malik with a 6 over mid-wicket. One of his signature shots. Normally, wicket-keeper batters are really good at slogging. But picked up the length quite early, and with the spin as well. Fetched it from outside off stump. But the main thing was the connection, extending the arms to make sure
that he reaches for it. Well, now 33 needed. Don't forget the last time they faced each other, Lions were short of 12 runs. Couldn't really chase 162 against Stallions. Goes across, follows it Shoaib Malik, but this time towards the offside will pick up another boundary, Rohail. This is good batting. He's got the better of the experienced Shoaib Malik there. First he went with the spin over mid-wicket. He knew that he will fire one outside the off stump, so he moved towards that side, slashed it, and no chance for any fielder. Good batting this from Rohail Nazir. Yes, opening the bat, very much intentional, and placing it to perfection, getting 4 runs, and putting some pressure back on the Stallions. Just have a look at this. He knows, and he wanted the fielders to be a bit more on their right side. This time wants to buy a wicket, flights it, but only a single to Rohail to end this over. 17 now gone, and it's 141 for 6. Good counter-attack from Newpur Lions. Well, Barrier Town, they're going global. Barrier Down Properties to develop a world-class gated community in Dubai South. Something to look forward to. And right now, what Newpur Lions are looking forward is a brave cameo from Rohail and some clean hitting from Shahid. 28 needed. It's about holding the nerve under pressure situations, and that is where the young boys, the young players that are playing this Barrier Town Champions Cup, at times they have been seen wanting into this time when last 30 or 40 runs are required. At the time when Rohail Nazir was still, Hassan Nawaz was still there batting on 73. They needed 49 of 37 after the couple of sixes that he hit. So that should have, from there onwards, should be an easy chase. But then wickets started to fall. As this one goes for another boundary. Amir comes in, and Rohail Nazir of the very first ball picks up the boundary and puts pressure back on the bowler. Yeah, that's poor bowling from Amir. Just straying down the ground. We all know that Rohail has the tendency to shuffle towards the off, but this was way offline. Just helping on its way with the 45 in. You need to be spot on, especially in the death overs. This is one over where Newpur Lions can really cash in, because pressure is now back on Amir. Innovation. He plays this shot perfectly and effectively. Another boundary for Rohail. When they come off, they look $1 million. Wonderfully executed under pressure, and the counter-attack is working now. And now there is some cat among the pigeons as Allied Bank Stallions feel the heat. In the last 5 deliveries, 1 6 and 3 4s. Pretty much they have evened out the contest as Rohail Nazir is the man at the center of the action. And Newpur Lions have ruffled the batting order. This did send Amir Yamin up, who still followed. But Rohail was pushed back in this batting lineup. Now he's proving his mettle. 24 of 10 deliveries. Down the track, aerial, but won't get where he was looking for. And just a single on offer. 150 up with that single. Brings Shahid on strike now. Yeah, they just have to be sensible from here onwards. It's 19 required of the 15 balls that remain. These two can bat, and then we know Musa Khan can also bat. And from here onwards, shouldn't be much drama if the batters bat sensibly. But Allied Bank Stallions would require something special.
as this one is flicked as well. Another boundary. So pretty much runner ball now required as Shahid flicks it for another 4, a valuable one. And the pressure now is completely shifted on the Allied Bank Stallions. Yeah, that was always a concern. Amir's overs in the death. Again, 2 straight, probably down the leg, and helped it on its way, Shahid, with a delicate touch. 13 already coming off this over. 2 more deliveries to go. This partnership has creeped up 25 of just 8 deliveries. Wild swing, bottom hand coming into play. Mid-off is in the circle. 1 bounce over the fence. This over is turning out to be consequential for Newpur Lions. Well. What a wonderful counter-attack this is from both of them. Last 7 deliveries, 5 boundaries have turned it all around. 11 now more required of the 13 deliveries that remain. And Shahid, knowing that mid-off is up in the circle, he goes big. And half a connection would be very beneficial. And so it proved to be, as the batters will definitely want to make the most of this last delivery as well from Amir. Yeah, it is pulled this time, and the fielder just couldn't see that. Sun in his eyes, and he just turned away from the ball. Dramatic scenes over there, and the over ends in dramatic fashion. Another boundary, and Newpur Lions are 162 for 6. Well now, Amir conceding 21 runs in the previous over. This one, Ubaid Shah straight into the sun, but shouldn't have turned his back. That's poor from Ubaid Shah. He's good enough, should have kept his hand, but probably should be looking at the ball or even searching for it. 7 now needed of 12. Allied Bank Stallions were sitting pretty on the top of the table. They might lose their position. Easy pickings right now from Rohail and Shahid. And Lions, if they win this, they'll improve their position, might climb up to number 3. Yes, position, and most importantly, the confidence goes higher from here in this important chase where they look down and out. And then a wonderful partnership this between the 2 young men. As Rohail Nazir tries to reverse sweep one. Once again, now it is 6 of 11 balls. So sense needs to prevail. It's Shahid, not Rohail. As the partnership is 34 of 11 deliveries. Well, Haris is pretty confident that he's got his man. And there's a question to be asked to Shahid Aziz that what are you looking to do? Probably trying to win it with 1 big hit. Wild heave. Trying to go into the leg side. Maaz now. Well, they need to refer it and see if Shahid has made it ground or not. But what a match. This match has turned things around. At one point, Allied Bank Stallions were up. Ebbs and flows of this match. And now Newpur Lions, courtesy to some brilliant batting from Rohail Nazir. Early on it was Hassan, but Rohail picking up that crucial over of Amir, 21 of it, has turned things. Imtiaz Iqbal has been really busy today. Let's see, slower through the air it was. Shahid Aziz. There's always this desperation to become a hero, to hit a big 6 and win the game. No problems there. It's this end we're talking about. He was out of the crease. And that is some smart work from Haris. Dragged his foot ever so slightly, Shahid Aziz. Late to put the bat in.
Yep, that reminds me of a TV serial, The Flash, and he was quick as a flash to take the bails off and get an important stumping. Although chances seem very slim for the Allied Bank Stallions, but Nurpur Lions from here onwards are the favourites with 163 for 7. As the new batter, don't know why he's waiting to join Ruhail Nazir. Probably they're still waiting for the decision from the third umpire. And everybody is looking at the screen. Well, all the action has come to a halt. Out it is. Shahid Aziz already back in the hut. 6 now needed from 9. Gone on 13. Shahid Aziz wanted to end it with a big hit. Allied Bank Stallions were put to bat first. They did lose their plot in the middle overs, but then probably were thinking that it's enough. Newpur Lions have made a good comeback courtesy to brilliant batting. Hassan Nawaz, Mohammad Taha, crucial 21. Ruhail Nazir still out in the middle on 26. Sharoon Siraj is the new batter, and he is no mug with the bat. He's a pretty decent one. 17 matches, 300 plus runs, averages a very healthy 27.23 as he comes in now with 6 of 9 required. Straight away, a premeditated stroke. The length wasn't there. What's the panic about? It seems strange that you can knock this ball straight forward, mid-on, mid-off, through covers, and you just decide ages ago what I'm going to do with the ball without even facing one of it. This shows that pressure can make you do things that you normally don't. This has been swept and swept in the gap, and this time will be a boundary. So only 2 remain. This is much better. Using the extension of the arms, taking the ball from where it should be taken and sweeping it in the gap. Yeah, I think that everyone wants to hit those winning runs. Sharoon, he had ample room to just nudge around and bring Ruhail back on strike, but again this time trying to be expensive and fancy. Picked up a boundary, 2 now needed. And what a turnaround that was for Newpur Lions. Down on one knee quite early. Should be looking for the second one, and that should be it. Sharoon Siraj with the winning runs. Newpur Lions have fought their way back into the game and have won it. Happy scenes in the dugout as Sharoon takes them past the line, and wonderful in the end by Shahid Aziz, and along with him Ruhail Nazir putting up his hand and playing a blinder, and before them Hassan Nawaz putting up a great show, scoring 73 runs and chasing this total down. And Allied Bank Stallions, well, they will have something to think about as they will be disappointed after losing this game. They were at the top of the table, but no more will they remain there as Newpur Lions takes this victory. Newpur Lions, they opted to bowl first. They did well in the bowling as a unit, but more importantly, it was the chase that actually made things difficult for them earlier against Allied Bank Stallion. But today they made sure they got over the line. Newpur Lions winning the game by 3 wickets. Allied Bank Stallions, well, not much to worry about, but they still have to fix few things getting into business end of the tournament. Still on the top, and probably see that they might lose their position. He'll be a happy captain, Imam ul Haq. Other than him, players stood up, delivered. Much was needed from Ruhail as well. And what a brilliant innings by Hassan. Smiles all over. Yeah, meet and greet at the end of the game as Newpur Lions win this by 3 wickets, and Shoaib Malik will have something to say to his players. Obviously, the game didn't go as planned, and this is how it all ended. Nudging one
to fine leg and an easy couple to get his side home. Sharoon along with Rohail Nazir have done the job. It was a wonderful performance overall and a much better display in the previous game. Their fielding cost them. They dropped around 4 to 5 catches, 3 in the first power play, and then a 6 of the last ball where UMT Marcos beat them, but they have come back strongly. And this is their batting card. Imam, only 4 today. Hassan, the big knock, 74 of 54, a very crucial one. Shahzeb came in and went after scoring 6. Taha looked good for his 21. Amir Yamin came in and went for a golden duck. Khushdil was out of sorts today, scoring 10 of 10. And then the big runs came from Rohail Nazir, 26 of 12, and Shahid, 13 of 6, and in the end Sharoon finishing it off with 6 runs from 3 balls. Allied Bank Stallions, where all the batters were put under the pump by Hassan. 1 for Amir and Ali, 2 for Shoaib Malik, crucial 2 wickets for him. 1 for Osman, 2 for Maaz as well. But that 18th over from Amir, conceding 21 runs, that's where the things turned around. Newpur Lions will be pretty happy with the performance. That's how things started. Hassan Nawaz was brilliant, but he lost his partner quite early, just chasing outside off stump. Imamul Haq with that expensive drive. Hassan Nawaz, he came in, displayed some beautiful shots off the back foot. Anything short and wide was put away. Some extra runs even. Receiving end was Amir yet again. This one straight up in the air. The lengths were not quite accurate when it came to bowling at Hassan. He kept on pushing that. Shahzeb, another expensive drive. He was in no position to play that shot. Muhammad Ali struck straight away. Down the track, good use of feet. Yes, that was the main thing. Hassan trying to dominate Usman Tariq, one of their pick bowlers. Actually was quite comfortable putting them away. This one huge coming down the track for a maximum. Yes, Hassan looked very dominant, hitting the big blows, taking the pressure off, but then the wickets kept falling from the other end. Amir Yamin getting out, then Khushdil came in, blasted a big blow towards mid-wicket, and then he couldn't carry on with this form. Usman was expensive today for a change. Hassan took him to the clean years in this over, pulling him for 4s and 6, and this beautiful hit over extra cover, a wonderful cricketing stroke, and then a premeditated step out, and the experienced Shoaib Malik, he knew it before it came. And then this big wicket, and see how pumped he was. And Rohail came in, and the scenes started to change with his 6 and 4 of Shoaib Malik. Desperate dives from the fielders, and then Amir came in, and he was offline, and Rohail was at his absolute brilliant, scoring boundaries, and Shahid nonetheless also getting boundaries on his turn. And this pull stroke which went in the sun, and Ubaid had no clue where the ball was. This was the stumping. In came Sharoon, who came in and hit this important boundary, and then they finished off the chase. A good contest between these two, but Allied Bank Stallions, they posted 168 all out. 43 for Hussain Talat, 34 for Maaz, Malik 22. Pick of the bowlers, Musa picking up 3, Khushdil and Shahid bagging 2 wickets each. Newpur Lions in response came in chasing it hard, with Hassan Nawaz scoring right from the first ball, 74 for him. Rohail, all important 26 not out off just 12 deliveries, made sure that Newpur Lions went over the line, winning the game by 3 wickets. Newpur Lions, congratulations to them. They will improve their position on the table, and they'll be delighted to do that. Let's see what the results have promoted the points table. Allied Bank Stallions still on the top after this lose as well. UMT Marcos are on number 2 and improved their position. Newpur Lions sending Lake City Panthers on number 4, now at number 3, winning their 3 games. We will take a short break, and then we will join you with the post-match presentation.
And it was Newpur Lions this time, keeping the cool and winning the game by 3 wickets. Welcome to the post-match presentation. And in the presentation party, I have with me Mrs. Shahrukh Babar, who's Director Sales, Beria Garden City, Beria Town. And before we talk to the captains, let me invite the player of the match for his sensational 74 runs. For Nurpur Lions, it's Hassan Nawaz. I would request Ms. Shahrukh Babar to please step forward and hand him over a beautiful trophy and cash award of 25,000. 54 deliveries for 74 runs, 8 fours and 3 huge sixes for Hassan Nawaz, making sure that the team wins the game. Hassan, well done. एक बार फिर बहुत ही शानदार बैटिंग सीखते जा रहे हैं दिन ब दिन. जी बिल्कुल, ये हमारे लिए मस्ट विन गेम थी और कोशिश यही था कि पूरा जाऊं और इसको फिनिश करूं. अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह टूर्नामेंट में अच्छी पोजीशन पे हैं. जो एबिलिटी आपने की है कि आप पहले हम देख रहा था विकेट कहीं ना कहीं थ्रो कर रहे थे, लेकिन आज इरादे थे कि लंबा खेल के जाएंगे. जी बिल्कुल, अर्ली ऑन इमाम भाई आउट हुए, वो शाजेब आउट हुआ, तो मेरा यही प्लान था कि मैं एंड तक जाऊं और फिनिश करूं गेम. थोड़ा कंडीशंस आज की पिच थोड़ा डिफरेंट थी जो इससे पहले मैचेस खेले आप बैटिंग के लिए. हाँ जी बिल्कुल, लेकिन बॉल ग्रिप हो रहा था स्पिनर का, स्पिनर को बहुत हेल्प मिल रही थी. और शोएब भाई ने जिस तरह बॉलिंग किया, हम यही सोचा हुआ था कि इन्हें रिस्पेक्ट देंगे, बाकी थोड़ा. तो शोएब भाई को आपकी विकेट लाने के लिए लाया गया था और आपने जैसे निकल के हिट मार दी, क्या उस बात का अफसोस रहेगा? जी बिल्कुल अफसोस रहेगा. पिछले मैच में भी उन्होंने आउट किया था और इस मैच में. तो क्या करना होगा उनकी बॉलिंग को डील करने के लिए? इंशाल्लाह अभी प्लान करके आऊँगा अगली दफा. प्लान करें. चलिए, बहुत ही अच्छा खेले, बहुत मजा आया आपकी बैटिंग थैंक यू देखने सर, का. थैंक यू. Well, that was Hassan Nawaz, the player of the match. Now time to talk to the losing captain, ABL Stallions, Mohammad Aris. कैसे हैं आप, कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहा हूँ, क्यों हम टॉप पे अभी भी. कैसा रहा ये मैच, कैसे देखते हैं? हाफ वे स्टेज आपने जो टॉस पे कहा था कि ऑलमोस्ट उतने रन्स हो गए थे, क्या मैसेज था हाफ वे थ्रू? मैसेज यही था, हमें पता था कि इस पिच पे टर्न होगा, लेकिन जिस तरह हसन नवाज खेला है उसने आउट क्लास कर दिया हमें. वो मैच एक साइड पे ले गया, जिसकी वजह से बॉडी लैंग्वेज थोड़ी लड़कों की गिर गई थी. लेकिन अगेन वही कहूँगा कि हमने एफर्ट अच्छी की, लड़कों को मौका भी दिया, उन्होंने अच्छी एफर्ट की. अगर कहें तो 17 ओवर तक सेकंड इनिंग में आप मैच में थे, आपकी ग्रिप थी, उसके बाद शायद वो एक ओवर आपको मैच में पीछे ले गया. वेल उसको मैं ब्लेम नहीं कर सकता, हो जाता है. दूसरा मैच खेल रहा था अपना, लेकिन सम टाइम ये हो जाता है. आपको इनको भी क्रेडिट देनी चाहिए. रुहेल बड़ा अच्छा खेले और हसन नवाज जिस तरह खेले तो उसने आउट क्लास कर दिया. गोइंग फर्दर, इस हार से क्या कुछ सीख के जाएंगे? बिल्कुल सीख के जाएंगे, क्योंकि जब टॉस हारते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमने कैसे खेलना है, और जब टॉस जीते तो फिर कैसे खेलना है. तो बिल्कुल इसका हम एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है. चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर रिमेनिंग गेम्स मोहम्मद हारिस. राइट नाउ टू द विनिंग कैप्टन नूरपुर लायंस, इमामुल हक. 2 नेल बाइटर्स हो गए, ये भी ऑलमोस्ट नेल बाइटर हो गया. आदत हो रही है ऐसे जीने की? देखें, अच्छा है, न्यूपुर लायंस जो है इंटरटेनिंग क्रिकेट हो रही है. देखें, अच्छी चीज़ है कि नेल बाइटिंग मैचेस हो रहे हैं, क्योंकि अब मेरे ख्याल से एंड पे जा रहा है टूर्नामेंट, तो सारे जोर लगा रहे हैं और थोड़ी सी गलतियां वो भी कर रहे हैं, थोड़ी सी जाम भी कर रहे हैं, तो इसी वजह से मेरे ख्याल से एंड पे जा रहा है मैचेस. या बिजनेस एंड की तरफ आप जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि नूरपुर लायंस ने अब सही अपना कॉम्बिनेशन और बैलेंस ढूंढ लिया और पिकअप कर लिया. देखें, बिल्कुल ऐसा ही है कि हम क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जगहों पे हम गलतियां कर रहे हैं. आज भी मुझे ऐसा लगता है कि हमने 10 से 15 रन ज़्यादा कराए. मुझे ऐसा लगता है कि हमने बीच में अच्छा पकड़ लिया था, फिर एकदम पिछले 2 मैचों से अनफॉर्चुनेटली हम बड़े क्रूशल कैचेस छोड़ रहे हैं, जिस वजह से जो है वो फिर 10-15 रन जो है वो जाता है. फिर यह है कि मैं और हसन अच्छी फॉर्म में है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर का इसी तरफ से भी एक इनिंग्स आए. तो वेरी हैप्पी कि जिस तरह रुहेल ने बहुत अच्छा एंड पे किया. हसन तो फॉर्म में ही था, बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन रुहेल का हम बहुत चाह रहे थे, क्योंकि अगर देखें, अगर आपको चैंपियन बनना है तो आपको किसी पे रिलाई नहीं, मुझे ऐसा लगता है रिलाई नहीं करना चाहिए. अच्छा है, थोड़ा चिप इन करते रहना, तो फिर दूसरी टीम आपसे डरती है. और बैटिंग ऑर्डर का भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आमिर यामीन को आपने एज अ फ्लोटर रखा है, किसी भी टाइम पे वो कहीं भी बैटिंग करने आ जाते हैं, तो यही प्लान है गोइंग फर्दर भी? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जी हमारी कोशिश होती है कि हमारे, क्योंकि लेफ्टी थोड़े से ज़्यादा है, तो हमारी बस ये होती है कि क्योंकि स्पिन पे यहाँ हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ना बॉल होल्ड कर रहा है, तो हम नहीं चाहते कि 2 लेफ्टी या 2 राइटी इकट्ठे खेलें. तो इसलिए आमिर को हमने उसको भी बता दिया कि भाई कहीं भी किसी वक्त भी तू जा सकता है, और उसको भी इस बात का आइडिया है. तो लेट्स सी, जो हमारे लिए अच्छा आज अनलकी रहा, लेकिन कल उसने परसों अच्छा खेला था, तो हमने आमिर यामीन को बैटिंग ऑर्डर, हमने दूसरे भी लड़कों को ये फ्लेक्सिबल रखा हुआ है, क्योंकि देखें T20 क्रिकेट है, बहुत जल्दी चीज़ें चेंज होती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि सिवाय पहले 3 के जो है हम सब फ्लोटिंग करते रहें. ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा. आप आज बहुत ही मज़ेदार मैच था और अच्छा लगा आपकी टीम की परफॉर्मेंस देखकर. थैंक यू सर, थैंक यू. Right, that is all we have down here from the presentation. Back to the commentary box now. Thank you, Ali Yunus. What a great contest we witnessed between Allied Bank Stallions and Newpur Lions. Allied Bank Stallions were asked to bat first, posted 168. Hussain Talad with 43,
flaring innings. Maaz from 34 of 27 and 22 for Malik. Musa picked up for bowlers, picking up 3 wickets, 2 each for Khushdil and Shahid. In response, Hassan Nawaz, what a scintillating knock that was, 74 of 54. Ruhail coming in and making his metal out in the middle, 26 not out and all important runs. And Taha with 21. Maaz, Malik picked up 2-1 for Muhammad Ali. Newpur Lions registered their another win, winning this game by 3 wickets. That's all for today, but the action continues tomorrow, where it will be match number 15 between Anglo Dolphins and UMT Marcos. Don't forget about this match because we will be live with you from Rawalpindi Cricket Stadium. Till yet, good evening. What a shot that is! All the way for a 6. Lifted up, into the hand. Up and over, but not really. Just lofted it. शानदार छक्का. Hey, 10 gone. This was a terrific catch from Haris. This is shot and cracked away. और किनारा लगा और गेंद गई महफूज हाथों में. Hassan Nawaz gets to his 50. And there it is, the big wicket, the next one. And this will go big. It's a 6. Sherun Siraj with the winning runs. Newpur Lions have fought their way back into the game and have won it.